Projects like extensions कार्य investment कार्य या कुछ शार्ट टर्म है लेकिन हमारा मैंडेट एक लॉन्ग टर्म है हमें सोच के हम तो इस यूनिकनेस के साथ काम करें और हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट के साथ रिलेवेंट सर्विस को डिस्कस in future, in present, ladies and gentlemen. Welcome to the inaugural National Youth Climate Summit, convened by Native Youth Club on climate change. Today, we unite as young leaders, climate activists, and visionaries to tackle the defining challenge of our time. Our goal is empowering youth for climate change and to amplify youth voices, mobilize our generation, and demand urgent climate action. Let's create a livable future for all. Projects like extensions कार्य investment कार्य या कुछ शार्ट टर्म है लेकिन हमारा मैंडेट एक लॉन्ग टर्म है हमें सोच के हम तो इस यूनिकनेस के साथ काम करें और हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट के साथ रिलेवेंट सर्विस को डिस्कस In future, in present, पाकिस्तान में climate को related issues आ रहे हैं, उस पे हम youth के साथ लेके चलें, youth को लेके काम करें. लेकिन हमारा मैंडेट एक लॉन्ग टर्म है हमें सोच के हम तो इस यूनिकनेस के साथ काम करें और हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट के साथ रिलेवेंट सर्विस जैसी सेकंड स्टार्ट हो जाए फिर आगे अभी वो स्टार्ट Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you.
First of all, I will introduce myself. This is Aftab Tabassum, Master Student of Soil and Environmental Sciences at Agricultural University. As part of this, I am alumna of Global Liberate Undergraduate Exchange Program. I am honored to host this prestigious mega event. Ladies and gentlemen, honorable guests, honorable speakers, a very warm welcome to all of you. Today we are here to discuss one of the most urgent challenges of our time, that is climate change. NYCCC presenting Pakistan first National Youth Climate Summit brought to COP19. The Native Youth Club for Climate Change in collaboration with the National Disaster Risk Management Fund, NDRMF, Well Hunger Haifa, WHH, and Prime Minister Youth Program. This event gathered youth leaders, climate advocates, policymakers, and experts from across the country to discuss solutions to the urgent climate challenges facing Pakistan and around the world. The summit serves as a platform to amplify the voice of Pakistani youth in the global conversation leading up to COP29 Azerbaijan Baku, empowering them to take bold action on climate justice, disaster risk reduction, and sustainable development. Through collaboration with the NDRMF and other national and international organizations, we aim to create a shared vision of Pakistan's contribution to global climate goals. NYCCC, our youth's voice, brings together a dynamic community to drive impactful change. As Barack Obama said, we are the first generation to feel the impact of climate change, and we are the last generation that can do something about it. Let us start our event. Let's play our respect and gratitude. We will start with a recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن Thank you for the beautiful recitation. वतन से मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है. Love for one's homeland is a part of faith. Ladies and gentlemen, please stand in respect for the national anthem. Please.
Thank you, everyone. Now I am honored to invite CEO of Native Youth Club, Mr. Muhammad Umair Mufakir. Umair is deeply committed to environmental advocacy and author of two books aimed at educating and inspiring youth about environmental issues and actively engaging in climate change mitigation and disaster risk reduction efforts. I want a round of big applause to welcome him to the stage for his welcome remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it is an honor to have each of you here today, united in a shared commitment to addressing the critical climate challenges facing Pakistan and the world. This summit is a milestone in amplifying youth voices in climate action, bridging a gap by creating a dedicated space for direct youth engagement in pre-COP and post-COP dialogues. Today, are not just participants, but essential contributors engaging with key stakeholders to shaping the climate agenda. The Native Youth Club for Climate Change is Pakistan's largest organization. They will focus on tackling climate challenges, established to mobilize and empowering youth for climate action. NYCC now engages over 2,100 dedicated volunteers who work together to foster climate awareness, advocacy, and impactful action. NYCC mission is to empower youth for climate action, and they become leaders in climate action. Equipping them with knowledge, resources, and strong sense of responsibility. Through education, resource provision, and active community engagement, NYCC promote environmental awareness and inspire youth-led initiatives centered on focused sustainable practices. With a particular emphasis on women empowerment, we work to mobilize community to create inclusive and impactful solutions to environmental challenges. We extend our gratitude to our partners and sponsors who support and believe in our mission, make our initiative possible. India National Disaster Risk Management Fund with Hunger Alive have been instrumental in expanding our reach and enabling today's summit. And we are profoundly thankful for their support. And a special acknowledgement goes to IndiaMF, National Disaster Risk Management Fund, and the CEO of IndiaMF, Mr. Bilal Anwar साहब, जिन्होंने हमें स्टार्ट से इतना सपोर्ट दिया है कि पहले हम तकरीबन 3 बंदे थे और मुझे याद है वो दिन के पार्क चाइना सेंटर में हम इनके साथ पहला मीटिंग कर रहे थे तो 3 बंदे थे आप तो उन्होंने हमें सिर्फ ये कहते रहे कि उमेर आपने आगे सो बढ़ना है आपने बड़ा सोचना है आपने छोटा नहीं सोचना हम आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे और इसके अलावा और उन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया कि हम यूथ थे हमारी एक्सपीरियंस नहीं थी लेकिन उन्होंने हमें इतना पुश करते हम भी उस वक्त इनिशियल फेजेस में थे लेकिन वो हमें स्टेक होल्डर की मीटिंग में इनवाइट करते थे उनके
साथ बिताते थे, इनकी डिबेट में शामिल करते थे, तो उन्होंने हमें इतना अप्रिशिएट किया, इंकरेज किया, और इससे हमें बहुत हौसला और आज आप लोगों के सामने। तो जस्ट मेरी बातें तो हमारी जो लीडरशिप या आपकी बेटी हुई है या जो हमारे सीनियर एक्सपर्ट्स वो हमें कहेंगे, मैं सिर्फ उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें हम वो जो विधानगर है इसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमें शॉर्ट नोटिस पे बहुत सपोर्ट दी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से भी, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ पूरे पाकिस्तान में जो प्लान डिजाइन किए हैं, हम हर सूबे के अंदर एक मेगा मेगा इवेंट करेंगे। फिर लास्ट जो हमारा इवेंट होगा वो इस्लामाबाद में हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करेंगे, और आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन एंड वेलकम टू द नेशनल यूथ क्लाइमेट समिट। थैंक यू। Thank you so much, Umer sir. Under your leadership, we anticipate the growth of NYCC around the globe. Now, I am very pleased to invite Mr. Bilal Anwar, the CEO of National Disaster Risk Management Fund (NDRMF). Mr. Bilal Anwar is an international climate policy and sustainable development professional with a reputation as a leading technical expert with over 2 decades of diverse experience in the field of climate change. Please join me in welcoming him as he delivers the opening remarks of today's event. Assalamu alaikum. Good morning, and thank you very much. It's good to see so many young, fresh, intellectual people in the room, and it's always really refreshing to be among the youth for number of reasons. So I think first of all, I think all the commandments goes to NYCC and Umar Mufakkar from three very naive and young persons actually came to my office, and from 3 to 2100, I've been told, actually I've just read it somewhere, that their membership actually stands right now. So this is quite a tremendous growth in the last maybe couple of years, and so I think they deserve a lot of support. They deserve a lot of commitment, and I think we all need to take them forward. Now, and there's a lot of events happening. I was in Marriott actually before coming here, and I'm sure that there must be a few happening in Serena, despite the limitations for the English cricket team actually staying there. But there's a lot of events. It's a COP season, and every COP season, before the COP season, actually, this is very the hype up activity which is going on. It's good to see that. The number of active players actually coming together, and both from the government as well as non-governmental sector, and actually mobilizing and gathering that kind of momentum, which actually culminates into the COP processes. And then of course we actually very anxiously and patiently we see that what results come out of the COP, and then we take it forward. Now, I do not want to make it a very formal kind of my kind of remarks here, and the reason is it's kind of emotional, and something I just want to kind of talk straight out of my heart. So one of the reasons actually I have a lot of faith in the youth, and one of the reasons that I was actually supporting NYCC and many others actually, we are very much active and engaged, and we are in the number of universities, and we actually creating opportunities for the young students, providing them the internships, a number of other opportunities. I think there's an element of the sense of guilt, which is very strongly and very deeply prevailing, and it should be actually prevailing anyone, people at my age and the previous generations, to be very honest with you. It's our mistakes, and it's your future.
So we have effectively played with your future. This is how I see this whole climate change debate. There are many ways of doing it. I can, if you want, I can sprinkle it, I can really pepper it up with a lot of technical jargon. I'm qualified to do that. I'm paid to do that as well. But I think it makes absolutely no sense to talk in that kind of language and that kind of technical jargon. I think someone has to kind of take the responsibility. And this is not only related to Pakistani youth, this is related to the global youth. And yes, Pakistan is not a great contributor to GHG emissions. So when we're looking at that, we haven't created this mess, so we shouldn't be actually taking a lot of responsibility of the Western world in the industrial revolution starting from 1830s in UK or other Western nations. But that's history, and we need to learn from the history, and we need to culminate, we need to synthesize the historical lessons that we see that what we need to do and how we need to take it forward. So literally, I think the science was very clear. From 1979, the science was extremely clear that something which is going on up in the atmosphere with the concentration of the greenhouse gases is not right, and something needed to be done. But the generations before me and even our generation, they conveniently kept their eyes closed, and not much was actually done. So even actually today, not much in concrete manner is being done. So that's where the role of the youth actually become extremely important. You are the catalyst of the change. You are the agents of the change, and you actually need to take your future into your own hands. And there are so many powerful narratives in the international climate change discourse, which you can actually take it. You can actually internalize them into your summits, into your talks, dialogues, a number of other interactions, a number of other actions and activism which you people are actually generating and you people are leading. Everyone has a different angle and lens to look at this issue. Everyone has a different angle to see how they actually see the insecurities which have been spread around for your future. So yes, climate change is one of them. Climate justice is another one, and similarly, adaptation is another one. So I mean, there are so many narratives, and those are powerful narratives. I mean, there's nothing. I'm not denying the importance or the value of those narratives. And but the point is, you need to take those narratives. You have to convert it to the action points. You have to take those action points and make sure that they find their right space into the policy arena. And that's not even enough. And that is even not enough, especially in the specific context of Pakistan, because Pakistan is very good in directing policies. And we have some beautiful policies and even more beautifuler strategies. But then the action on the ground is just not really getting off the ground. It's not there. So the youth has to become the change and the agent of the change. And that was one of the reasons that NDRMF, as a person who was leading the NDRMF, but more on a personal ground as well, I have actually taken the initiatives, and I have tried to provide the support which NYCC and several others. I mean, you're not the only one who is actually providing a support for a lot of other groups as well, and we're trying to combine them together. Now, with the 68% of Pakistan's youth, I think that's quite a power. That's quite that can be, once you are able to actually group yourself together, combine yourself together, convert into some kind of a force, I think you can bring the change which is very much needed. And I would very strongly encourage you, all of you in the room, that you must come together and you must take your future into your own hands. And you should hold us responsible, because it was our mistakes. And we have actually played. And I'm a father, and I speak for my own children as well. And I actually feel it for them as well, that our mistakes have actually jeopardized their future.
And this applies at a family level, at a family unit, as I see it at my scale, but it applies at the community level, it applies at the national level, and it applies at the global level as well. So yes, with 68% of Pakistan youth, I think you have the power, and you have to take your action to and engage and connect your action to the global youth. There's a very strong movement at the global level is actually shaping up. And that movement needs you. That needs your power. That needs your voice, and that needs your activism. Just to give you a kind of a little a kind of a story from the international climate change negotiations. The COPs do not happen automatically. The leaders, they do not really fall in, and they do not behave, and they do not make decisions in a kind of a benign manner until and unless they don't feel the pressure which is actually generated out of by the youth and by all these different activist groups as well. I happen to be not in Kyoto when the Kyoto Protocol was signed. And I joined the UNFCCC process in 1999. Kyoto Protocol was signed in Kyoto in 1997. But just I was told by my seniors at that time that international community and all the leaders actually they packed their bags on the last day of the COP and they said the Kyoto Protocol is not happening. But then the youth actually closed all the doors of the convention center and they said that we're not going to let you go until you sign the pact. And that actually happened, the Kyoto Protocol. We have seen the kind of engagement of the youth in the Paris Agreement as well. And we might be actually seeing that a similar kind of a stimulation at Baku as well. So you have a lot of work to do. 2100 is not enough. I don't know, I haven't done the math yet, but Umair, 2100 out of 68%, out of 250 million population of Pakistan, that might be somewhere between slightly less than 1%, if my mind is correct. So you still have a lot of work to do. You still have a lot of voices out there where you haven't really reached yourself, and you have to get them engaged. You have to reach out and you have to bring them into this forum. Our support, of course, is going to be there. I thank you very much. Thank you so much, sir. Your unwavering support who provides both financial assistance and moral encouragement to help us to achieve our goals. We have now a brief snapshot of NYCC's 2-month fellowship program, which has empowered our young leaders to tackle the climate challenges. Please, present.
This fellowships is successful by the honorable speakers and whole NYCC team and participants. Please clap for yourself. Now we move on our first panel discussion on gender and climate change, empowering women for a sustainable future. Moderated by Ms. Sidra Riaz, Advisory Board Member, NYCCC, Faculty Member, Governance and Public Department at Namal University, Islamabad. Our esteemed panelists include Mr. Asif Shirazi, Country Director of Islamic Relief Pakistan, Ms. Sobia Becker, Advisor for the Pak German Climate and Energy Partnership, Ms. Seema Samad, Prime Minister, Gender, Environment and Strategic Initiatives, Mr. Muhammad Fawad Hayat, Senior Director of Recharge Pakistan at WWF, Ms. Dr. Sophia Khali, Chairperson of the Environmental Science Department, Alam Iqbal Open University, Dr. Habib Jan, Director at the Environmental Protection Agency, Khyber Pakhtunkhwa. Please join me in welcoming our panelists. Good morning, everyone. I hope everybody can hear me. First of all, I would like to welcome the crucial panel and a very important topic which we are going to discuss today. That is gender and climate change, in which we will be talking about empowering women for a sustainable future. When we were planning to host two panel discussions and we were deciding on the topic, I think this is something which I have requested the members to actually inculcate a topic on gender and climate change, because through our experiences in climate change, we have seen that climate issues are not gender neutral, and women are the ones who are actually disproportionately getting affected by climate change. So I think this is a very important topic in which we are going to be talking about. I'll just give a brief introduction once again of our own panelists. Mr. Asif Shirazi, who is a country director at Islamic Relief Pakistan, will be joining us in a few minutes. We have Sobia Becker, who is an advisor for Pak German Climate and Energy Partnership. She brings a wealth of knowledge on international partnerships and sustainable energy solutions. We have Mr. Muhammad Fawad Hayat, who is a senior director at Recharge Pakistan at WWF. He will bring a breadth of knowledge on environmental initiatives that include women as key stakeholders. We have Dr. Habib Jan, who is a director at Environmental Protection Agency in KP, who will share his insights and experiences in implementing gender-responsive climate policies at provincial level. We have Ms. Seema Samit, who is a program manager for gender, environment, and strategic initiatives
And then we have Dr. Sophia Khalid, Chairperson of Environmental Sciences Department at Ilham Iqbal Open University. And about me, I'm Sidra Riaz, and you already know I'm a faculty member of Governance and Public Policy and working as advisory board member. So I think let's jump into the discussion. We can begin with Ms. Sophia Baker. Ma'am, being a part of such an important initiative, such as Pakistan-German Climate and Energy Partnership, how the projects at your organization integrate gender consideration into its climate energy projects, and what impacts by doing that have you observed from involving women into these initiatives, and how much do you think involving women in these initiatives is important? Yeah. Thank you very much, Sidra. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. First of all, I'd like to congratulate Umair, his very capable team, and NYCCC for this wonderful summit that you're hosting. This is very encouraging, and also to Bilal for his very wonderful remarks. Thank you for that. The Pak-German Climate and Energy Partnership represents all of Germany's bilateral investments in this country. And as the name suggests, these are investments that Germany makes in the area of climate and energy. In your opening remarks, Sidra, you already said something that's very important to my heart, and this is the fact that women and children are the most vulnerable. They are the poorest of the poor. They are disproportionately impacted, negatively impacted by any crisis, whether it's a climate crisis or any other sort of crisis. And you would be well aware that Germany now has has a policy in place. It's called the Feminist Development Policy. So gender lies at the very heart of everything that we do. In fact, no project will be approved by our ministry unless it has very clearly defined gender considerations in the work that is being done. So that project will not be implemented. So you can be confident in the fact that the 26 projects, financial cooperation as well as technical cooperation that are being implemented in Pakistan by Germany with the support of the Federal Ministry for the Environment and Technical Cooperation. All of these 26 projects have a very strong gender component at the heart of it. We also have the principle of leave no one behind. And again, this plays into our programming, and we see that. So from our smallest actions, like making sure that a panel, and congratulations to NYCC for having a gender balanced panel again, but it's the smallest things like at seminars, at meetings, trying to ensure to the extent possible that there's a 50-50 split between male and females. Also within our organizations at the GIZ, our management is committed to having at least 50% employees, and we make sure that women, our female colleagues, get all of the support that they need to come to the workforce, to stay in the workforce, and to grow and prosper in the workforce. Now, this is addressing gender specifically, and here I'm not talking just about biological roles, but rather also the societal roles in any project. It's very important because women are the best natural resource managers that any community can have. Women are at the front line of every climate crisis. Women, especially when you have in the smallholder farmers, women are usually taking the lead. So they have a lot of indigenous knowledge about climate change. And I can tell you with a great deal of confidence that if you go talk to them, they are probably more aware of climate change without using the jargon, as Bilal was saying, defining it in very simple terms, but they're very aware of climate change. So tapping into that knowledge is also very important. Speaking to natural resource where are taking, this is with specific respect to the video that we have guardians amongst the women community. They're taking the lead in natural resource management.
We have in the work that we do with municipalities on making municipalities more efficient, energy efficient, smarter. We have many female employees who are there making sure that their municipalities are successful. And with their interventions, especially, I'd like to mention one of the municipalities in KP. They have a significant amount of savings that they've already registered. We are increasing the number of women who are getting trained in, for example, in climate finance, in the new projects that are coming up on smart grids and digitalization of the grids. We have a lot of initiatives coming up, and the specific gender-related targets that are set in projects ensure that this will be on the uptick. Thank you, Sandra. I'll pause here. Ma'am, thank you so much. I must appreciate the way you have explained it to the audience that how feminist development policies are important and how women are actually the biggest resource managers nowadays. We will move on to Dr. Sofia Khalid. Ma'am, coming from academia, how do you think the environmental science curriculum could integrate gender perspectives into the environmental sciences curriculum? And as a university, as an academic institute, like most of the audience sitting over here are coming from different universities and colleges, how do you think these educational institutes should play their part in training the next generation of women leaders in climate action? Okay, thank you very much. I also congratulate the organizers, especially for organizing such an event. And I think these are very important, especially for the youth to have some encouragement about the initiatives that they are taking. And I also appreciate the staff for supporting them. And we are also there to support them in many of them. Okay, so if I come back to the academic institutions, yes, I think academic institutions are the places where a whole new generation is being trained. So be it a school, be it a college, be it a university, if you want to kind of empower youth for environmental, for taking some initiatives for the betterment of environment, or for mitigation or adaptation of climate change, it is very important to have a curricula that meets all of these needs, and it's very important that we have this awareness about the climate change and about the environmental degradation from the very beginning. So there are many institutions, I think from the last few years I'm seeing, even in schools, some schools have started this environmental education courses, and they do have these regular sessions with students about environmental education as well as about climate change issues. And then in universities, if I say, there are around 7 universities in Twin Cities which are offering environmental sciences courses. They have environmental sciences departments in which they are having these courses. And we have obviously nowadays in almost every university we have this Department of Environmental Sciences, and Department of Environmental Sciences specifically has the curricula that has most of the courses that are related to environmental sciences and how are we facing these environmental challenges, and what are the strategies that can be adopted for climate change adaptation and mitigation. So yes, I think it's very much integrated into the curriculum, especially of the Environmental Sciences Department. And we have Higher Education Commission. They have this council which is work for the updating of the curricula. So after a few years, they do hold meetings where they update the curricula according to the requirements. So if you say that how much is that integrated, then if I talk specifically with reference to Environmental Sciences Department, yes, it is very much there. And about other departments, yes, now I have seen in many other departments now they are integrating the climate education into the curriculum. So specifically, you see, and we are talking about gender and climate change and environment. So if
you now look at the curriculum of most of the universities where gender studies program is being offered, they do have a course gender and climate change. Yeah, thank you so much, ma'am. I completely agree with you. Coming from a background in social sciences, I also see a lot of inclusion of climate education subjects in the social sciences subjects as well. And I think audience could also agree with us that if you are coming from social sciences background, do you also study subjects on environmental issues, even if you belong to a social sciences background? Raise your hand. Those who are actually studying social sciences के अंदर climate education के subjects पढ़े. That's very nice. We are also doing that in Naman as Like I said, even if it's not a part of, I mean, it's not specifically a course that finds some environment or climate change component. Sometimes there are some assignments or presentations in which that maybe some other course, it's title of some other course, but they're integrated. Thank you so much. So we'll try to keep the discussion bilingual as requested by the organizers. I'll move on to extensive experience as a project manager in the initiative on gender environment strategic initiatives, ma'am. In your experience of overseeing environmental initiatives, for now we are clear that gender mainstreaming and development policies and policy initiatives are very important. What do you think are the most impactful gender responsive climate policies you have seen happening around implementing around Pakistan, and what are the strategic approaches you think policy makers could use to advocate for women inclusion and climate governance at the policy level? Thank you so much. First of all, I want to thank you for bringing the Acadian perspective, and I'm from the north, from the mountains, so I'll give you the unique perspective of mountains as well. So, regarding translating the policies into actions, as Bilal Sab mentioned in his speech, Acadian has a very inclusive and the core values of Acadian is inclusion and diversity. And building on that, we are working for last 50 years in some of the areas. And the areas where we are working in the north of Pakistan are particularly more vulnerable to climate change. Risk reduction policy. So one of the things which I have clearly seen, very transformative in terms of translating the policies in action is the communities and preparing them for combating the unprecedented of climate change. So we have around 35,000 volunteers plus, and 50% of them are in terms of climate change and disaster preparedness. I'll give you, because there is a lot of youth here, I'll give you the perspective of why it is important to bring women in DRR, especially in terms of preparedness and response. So there was this incident in Karachi back in the days. There was a building that collapsed, and there were some women who got trapped in that building. What happened was that the men were not allowing the male rescuers to go inside and rescue them. So what happened was that our SAR team, search and rescue team, that is a trained team. There are 3 search and rescue teams across Pakistan, which are basically trained in INSARAG standards. And we have women search and rescuers in that team. So our women search and rescuers went there and rescued those women. So it's very important to bring women into disaster response, especially when we are facing this unprecedented of a lot of unprecedented because of the climate change. Secondly,
Fawad Haya. Sir, as your experience as a senior director at the Recharge Pakistan, of the audience as well, that Recharge Pakistan is a very, is the first eco-based exploration project, implemented by different organizations such as WWF. And if you have not, still, visited the website, you should, and Google about, Recharge Pakistan, as it is, the very important project Pakistan has nowadays. Sir, in Recharge Pakistan, how do gender considerations in your work on water management and climate adaptation? And given your work experience with this program and WWF, how do you see the role of women in managing natural resources and contributing to the conservation efforts throughout the Pakistan history as well? Thank you so much. I think a very important topic. That's one of the reasons I got excited to be part of this panel this morning. Women, I think they haven't really been given this due role, and that's the reason we do not have impact, or the impact which we should have seen over the past decades, so to say. In terms of WWF, we acknowledge the fact and put the gender right where it should be, or maybe more than that, to be honest. In terms of water management, in terms of water management, resources management, I would completely agree with you. Women are better than men when it comes to actually taking care of the natural resources. We can't really decide. We cannot think like that. We need to have them included in the decision making in terms of WWF. So I was in the field myself in the north last week, and you see half the country actually goes out to work. Not everybody works in the same station where they live. So that's where the male go out to earn livelihood, and the women are left to take care of the home, the surroundings, and to take care of the entire region or the ecosystem, I would rather, which includes the kids, which includes the natural resource management, which includes them. When you go up the north, for instance, and the water flow path is not clear, that means the family is in danger to actually come across a flood any time during the day or night. Who is going to be there to survive if the women are not trained? It's the women who actually take care of the cooking, heating, washing, and all those domestic matters. If they're not trained, how will they actually use water for that? So if you don't include them, that's where you reach as a country where we stand today. It's just because of the fact this element was not included over the past decades, which I think should have been the starting point. Now coming to what WWF does. So we're very sensitive on this particular part. Be it as a gender equality in terms of the organization itself. In terms of the Recharge Pakistan, the team itself, we include almost 50% women with us at all grades. They are in the decision position sector. That's how we proceed. Then when it comes to policies, I have 3 sites. One is being currently led by, so that's the importance we give to them. And the angle they bring in with all these facts is far more important than any other thing. We are spread across the country as WWF. We have about 40+ offices across the country. And almost every office has gender equality in that perspective. You go to the communities. You can't fight for communities without going into the communities and working with them. Otherwise, there's no access, friends. Frankly, you just go, you invest projects, and then by the time the project ends, there's nothing left. Who takes the ownership? It's again the women. The men are out there earning. In terms of Recharge Pakistan, so we will be coming up with different aspects and thematic areas, which includes DRR, which includes the water flow paths, which includes the flood protection, which include the water embankments, water storages, and then recharging the overall basins for that. And we're including women. And you'll be amazed to see that we decide while sitting in Islamabad that all right, a particular region in the country might not have women, but that's wrong. So my watersheds include the Chakale, and we have women.
taking decisions, making policy, they're working with us, not just from WWF, from all organizations. That's how you need to include them in terms of that. And so all these watersheds, all these regions, you don't have women, you're not going in. So that's the inclusivity is important in this particular. Thank you. Thank you so much, Mr. Fawad. I think, I would just endorse what you have said, that training women in water management or in any policy making. And so, perspective from KP, what is the biggest policy gap you see in KP regarding gender responsiveness in climate policy making? And how does Environmental Protection Agency actually works to address these gaps? Thank you very much for having me. I'm grateful to the NYCCC to invite me to this very important. Grateful to all the organizers for having me. Well, you actually asked 3 questions, so let me go through it. We all know that climate change or the effects of climate change, they are transboundary and they are sort of ubiquitous. So it affects everyone, regardless. But having said that, when we take the gender perspective, I think women, they are disproportionately affected by climate change if we compare them to their male counterparts. And the reason for that is, one is, of course, the effects of climate change, but on the other hand, we have this socio-economic inequalities, which unfortunately we have. And because we talk of women, our rural women, they are mostly engaged in agriculture and food security and water management, etc. So large proportion of them, they are very affected by the effects of climate change. Now, coming to your question, what our agency does to address these issues. At the agency, recognize the critical role in both at the policy, environmental policy level and the implementation as well. Khyber Pakhtunkhwa was the first province who framed the climate change policy back in 2017, along with the action plan. And recently, we have some 2 years back, we revised and we reviewed the policy because we have this. In this policy, we have a very, I would say, dedicated chapter for the gender and youth, of course. In chapter 5, section 8, subsection 2, it states about the women inclusion in facility in climate change, effects of climate change, and all this. So at the policy level, we have included also in the climate change action plan, we have also given a role to it, and we consider the gender point as well. So that's something on the policy level. But in addition to that, the provincial government has formed a commission on the status of women
different projects with different, in partnership with different organizations in the province. And they are working on different, environment related and climate change related programs. Now you talked about the gaps. So obviously every policy, no policy is perfect, and there's a sort of evolutionary. You have to update and change the situation. So I would say in our policy, although we have included the gender factor, but I think we are just scratching the surface. There's a lot to be done when it comes to women inclusivity and gender factor. I think first of all, I think we don't have research women, the effects of climate change on women. I think that is something which is so we should have this targeted data to formulate some targeted policies. The second thing I would say the gap is I think there's very less budget allocated for this kind of activities so budget is also our resources allocation. Capacity building is also something which we need to work on when it comes to women. So I'm not sure if I answer your questions. Yeah, that was it. Thank you. I think you did a wonderful job. Thank you so much. And yeah, I completely agree with you with the point that there is extremely crucial gap in the credible data and capacity building. And also, I think when I was working on my PhD thesis on feminist women in a document, in a program document is something else. And actually including them in the process is another thing. So most of the programs and projects and policy actually do now mention women in them, if you look at the document. But yes, involving them is also a crucial issue since Naseema was actually talking about the traditional and cultural constraints we already have in Pakistan. So we will move on to Asif Shirazi Saab. Sir, thank you so much for joining. Sir, could you please share with us the unique challenges do women face in these areas, and how does Islamic Relief actually addresses these challenges within your programs? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, and extremely sorry for the delay. English especially असल में मैं पिछले दो तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा और सॉरी फॉर द डिले थोड़ा सा ट्रैवल सिकनेस उसके अंदर भी हूँ, लेकिन इवेंट आप लोगों का जो है वो काफी इम्पोर्टेंट और दिल के काफी करीब था, तो इसलिए शिरकत जरूरी जो है वो समझी। लेकिन मसला ये है कि असातिज़ा कराम नीचे बैठे और जजेस स्टेज पे बैठा हो तो बड़ा मुश्किल होता है अंदर जो है ना वो बोल सके। तो एनीहाउ आपने जो सवाल किया है ये कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना बहुत आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली जब आप पाकिस्तान की उन दूर दराज हार्ड टू रीच एरियाज के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो बलूचिस्तान के जो है वो इंतहाई दूर दराज के रूरल एरियाज हों या खैबर पख्तूनख्वा या न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट एक्स क्वाटा के इलाके हों जिनको हम काफी ये शायद वहां पे जो है वो टीम तक एक्सेस और जो है वो काफी मुश्किल हो। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम लोग इस्लामिक रिलीफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करती है कि हम
खवातीन जो हमारी कम्युनिटीज हैं, स्पेशली जो मुश्किल जगह हैं, वहाँ पर भी हम उनको शुरू से ही जो है वो जो डिसीजन मेकिंग है, फैसला साजी है, उसके अंदर जो है वो शामिल करें और प्लानिंग की फेज से जो है वो उनकी राय को लिया जाए। पिछले अरसे में डिस्ट्रिक्ट खैबर के अंदर औरकजई में और खैबर में जो है वो काम किया, जिसमें बुनियादी तौर पे जो रिटर्निस थे, जो टीडीपीज, टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पीपल, जो वापस रिटर्न हो रहे थे, तो उनके लिए जो है वो हमने लाइवलीहुड्स के अंदर और सोशल कोहेजन के अंदर काम किया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये था कि जो खवातीन थी उनको किस तरह जो है वो हम मुख्तलिफ चीजों के अंदर प्लानिंग फेज से शामिल करें। तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो हमारी फीमेल वर्कर्स जो है वो उनका जो इंटरेक्शन वहाँ की खवातीन के साथ हुआ और फिर कोई तंजीमें वगैरह जो है वो बनी, और फिर उन तंजीमों की मदद से उन खवातीन ने जो है वो मुख्तलिफ जो चीज़ें थी, चाहे वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट लाइन एजेंसीज थी या चैम्बर वगैरह की चीज़ें थी, तो वहाँ अमली तौर पर पार्टिसिपेट किया। नॉर्मली जो है वो हम लिख तो देते हैं कि खवातीन को की शमूलियत की जाएगी, लेकिन कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, पोजीशनिंग के हवाले से चीजें नहीं होती हैं। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी हम लोग इंटरवेंशंस करें वहाँ पे हम उनकी पोजीशनिंग का भी जो है वो ख्याल रखें। पोजीशनिंग उसी सूरत में आती है जब उनको आगाज से प्लानिंग में शामिल किया जाए। और कोई भी कम्युनिटी बेस्ड जो भी काम इस्लामिकली करती थी, वो जब तक मेल और फीमेल दोनों कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से करारदाद या रेजोल्यूशन नहीं आती थी, हम लोग उसको नहीं जो है वो करते थे। सेकेंड जो चीज है जो कि यहाँ पे केस ऑफ एनी क्लाइमेट डिजास्टर, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं वो खवातीन और लड़कियां जो है ना वो होती हैं। हमने इस फ्लड के अंदर देखा कि अराउंड 40% ऑफ द पीपल हु वर इफेक्टेड बाय द फ्लड्स 2022 वो खवातीन और बच्चियां जो है ना वो थी, और उनके मसाइल भी बहुत ज्यादा थे। फ्लड्स के बाद हमने जो है वो एक रिपोर्ट, एक रिसर्च जो है वो की, जो एडेल्फी यूनिवर्सिटी के साथ थी। उसने तकरीबन 70,000 जो है वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो है वो फ्लड इफेक्टेड एरियाज में थी, और वहां पे जो उनके मसाइल आए बहुत ज्यादा वो तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज आई वो ये है कि 42% जो बच्चे हैं उनकी जो है वो स्टंटिंग ग्रोथ थी, और उसमें ज्यादा तादाद जो है वो लड़कियों की थी जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ थी। तो वो लोग जो है वो इसमें चैलेंज जो है वो ज्यादा है, लेकिन इसका ये एक किस्म की अपॉर्चुनिटी भी है, स्पेशली उन इदारों के लिए जो कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, जिनकी पाकिस्तान के अंदर समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम लोग जो है वो खवातीन और बच्चों की जो है बच्चियों की जो है वो शमूलियत को हर चीज के अंदर जो है वो यकीनी बनाए। और हमारे जितने प्रोग्राम है, न सिर्फ डॉक्यूमेंट बल्कि उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर इन चीजों को हम मेक श्योर करते हैं। फ्लड रिस्पॉन्स और रिकवरी में तकरीबन हमने 1.8 मिलियन लोगों को सर्व किया है, और उसमें से 40% जो है वो खवातीन और बच्चियां हैं। फ्रॉम प्लानिंग फेज टू उनको चीजें जो है उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन, जिसमें बहुत ज्यादा कैश ट्रांसफर भी शामिल है कि खवातीन जो है वो अपना लाइवलीहुड सोर्सेज में शामिल उसमें कैश उनको जाए, ताकि वो अपने और अपने बच्चों की और फैमिली की जरूरियात का ख्याल रख सके। थैंक यू सो मच सर। मैं बिल्कुल आपकी तकरीर करती हूँ कि आगाज से इख्तिताम तक, पॉलिसी प्लानिंग से लेके पॉलिसी एग्जीक्यूशन तक, बल्कि इवैल्यूएशन में भी आगे खवातीन का इंक्लूजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। I would like to thank each of the panelists, and we are directly moving to the question answer session. For now, we can only please करें तो please mention कि किस पैनलिस्ट के लिए आप क्वेश्चन डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। थैंक यू। माइक। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे मेरा नाम, कल हम एक कॉन्फ्रेंस में थे तो एक जीबी के मिनिस्टर ने कहा कि हम अनप्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा,
unplanned development कर रहे हैं, but it is unplanned. इस unplanned development को हम planned development में कैसे कर पाएंगे? Anybody can. Thank you. I think you're right. The question was very valid in the context of unfortunately, we have a lack of coordination. There's a big gap between different departments, relevant departments actually. So people are working, but they are sort of working in silos. Maybe they are working great, but of course they are. There is a lack of coordination, and I think that is something. If we narrow this gap, we can have. But how can we narrow this gap? I'll try to answer that. जो मैंने भी कहा ना, basically जो लोग relevant हैं, जो concerned हैं, जिन्होंने affect होना है, हम तो decision making में बिठाते ही। बात तो जेंडर से शुरू हुई थी, लेकिन असल हकीकत भी ये है कि जिनके लिए फैसला किया जाता है उनसे पूछा ही नहीं जाता, और इसीलिए वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुई, और वो किसी भी किस्म की ले, ये नहीं कि मुल्क में पॉलिसी नहीं या इस मुल्क में कभी पॉलिसी बनी नहीं। पॉलिसीज हमेशा से बनी है, बल्कि और ममालिक ने भी वो पॉलिसीज लेके उसको इम्प्लीमेंट किया, वो मुल्क ठीक चले। हम लोग पॉलिसी तो बना लेते हैं, चीजें हैं, एक हम लोग उनसे बात करना ही पसंद नहीं कर रहे जिनके लिए हम फैसले कर रहे हैं, और दूसरा हम आपस में भी बात नहीं करना चाह रहे कि माजरत के साथ, लेकिन हर शख्स को ये लगता है कि जी मैं ही सिर्फ ठीक हूं और मैं ही तगड़ा हूं। इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा और आपस में हार्मनी पैदा करनी पड़ेगी और सबने एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं चल सकते। अदरवाइज ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट तो नहीं है, ये फ्रैंकली अनप्लान्ड डिस्ट्रक्शन है। आप कोई इलाका उठा के देख लें, हम तो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। Thank you. Do we have any other question? I am Asad from Pakistan. I got a question from Dr. Deep Jan, coming from KP. So my question is related to where the KP government stands when it comes to the horrendous deforestation news coming out from the northern areas in general, in particular the X of the region. If you could please comment. We saw these some of the pictures in the media, social media circulating some couple of months before, and then our secretary saw he investigated that, and there was little truth in that. But having said that, of course, this is the responsibility of the forest sector. I'm representing Environmental Protection Agency, so it's I think we don't allow any illegal cutting or something of the trees. So of course, maybe there are pilferages and there are problems, but this is the job of everyone as society that to keep an eye on that and to prevent these illegal things. Only one department or agency cannot. So as a society, we have to keep an eye on that. Thank you. Thank you. Asad, that's a great question, and thank you for that. But what we need to get to, especially also in light of Rafi Saab's question, is the idea of systems thinking. We need to look at all of these processes. Why is this deforestation taking place? Is it because people need energy?
And why is it that there aren't renewable, sustainable sources for energy that could be very easily provided? So it's a question of really unpacking the situation and understanding. I mean, leaving aside the political economy considerations and other, the real question is that if there is a need, has that need been identified? How can it be met? That's really the question for development professionals. Thank you. Thank you so much. Do we have any other questions from the audience? Assalamualaikum everyone, this is Shazia Batul from Federal University. मेरा question जो है वो my academic panelist है. And what do you think that just giving assignment and presentations to students, is it enough for climate action? I think being a student, obviously, most of the students, they are more concerned about getting their degree, and they are more science or climate change, and we keep trying that. We in the recent past we had talks to our students about how if they are studying this subject, or if they are working in this area, or if they really from environmental science but from other subject or other discipline, how can they play their part into the environmental conservation, and how can they lead such initiatives? Thank you so much, ma'am. आपके question जो था उसमें मैं and I think no, assignments and presentations are not enough at all. Like जैसे मैम ने भी यही कहा कि उसके अलावा भी बहुत सारे like I think hands-on experience, and we will be having a youth panel as well where I'll be speaking. उसमें हम इस पे और discussion करेंगे कि hands-on experience and actually students को field में involve करना. जैसे NYCC ने 2100 youth members को from across Pakistan इकट्ठा किए. This is actually where we are going to make a change, other than just sitting in the classes and doing assignments and presentations. Okay, do we have time? We can take, I think, one question, please. Assalamu alaikum everyone. Shah Rukh Khan this side. Sir, my question is the guy representing EPA from KP. How youth is involved when it comes to policy making in the environmental protection side or climate action side? When it comes to the Khyber Pakhtunkhwa. Thank you. As I mentioned already, that youth is also included in the policy and in the action plan. I personally, a few years back when I joined EPA, we started research, development and coordination section, under which we actually signed different. So and that's we wanted to include to actually to reach out to youth through different programs. So on the policy, at the policy level, yes, we have included, and but again, I think a lot to do in this respect as well. We have to do it.
you have any questions? So everyone, I'm from Skildu Pakistan. My name is Asif Ali. तो अभी यहाँ पर तरीके से बात की कि जो नॉर्दर्न एरिया है वो बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट के लिए और मैं खुद वहाँ साल करता हूँ तो मैं विटनेस कर रहा हूँ ये चीजें तो वहाँ पर क्योंकि ग्लेशियर वहाँ पर बहुत ज्यादा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह ग्लेशियर में हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी कुछ कन्वेंशनल मेथड्स ऐसे थे जो जिसके जरिए वो ग्लेशियर ग्रो करते थे लेकिन अब वो कन्वेंशनल मेथड्स प्रैक्टिस में नहीं है और उसको ना लिटरेचर में लिखा गया है तो इस पर हम क्यों काम कर रहे हैं और काम करना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते थैंक यू सो मच यू आर वेरी राइट ग्लेशियल ग्राफ्टिंग का जो आप difficult to put to revive this very indigenous method of glacial grafting. But yeah, there are actually there is some work going on it. A group that is actually documenting around it as a good practice, and they will be showing it to the international audience. So, थोड़ा बहुत literature और वो सारी चीजें तो हैं, but still we need to rethink about how to make it relevant for today. It's very important. सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा जी WTF के पर्सपेक्टिव से कि जहाँ पे ये चीजें खत्म हो रही हैं वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज एन R&D करें और इसके अंदर इन्वेस्ट करें। एक छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि बगलोट वैली में ऊपर अगर रूटीन में फ्लड फ्लो पाथ की बात की जाती है तो गेवियन वॉल लाई है, जबकि इंडिजिनियस नॉलेज कहता था विलो मैशिंग को इस्तेमाल किया। हमने उन दोनों को हाइब्रिड किया है जी, अभी हम उसके टेस्ट फेज में हैं, लेकिन हमने बगलोट के अंदर जो गेवियन वॉल बनाई है उसके अंदर विलो मैशिंग की है और उसके अंदर वही एंगल और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया जो कि हिस्टोरिकली किया जा रहा है। और उसकी वजह यही है कि जो बिल्कुल हम ये ग्रे पे चले गए थे ये आगे है, उससे भी मसले हल नहीं हुए और जो पहले थे उसे कम्युनिटी सर्वाइव कर इंडिजिनियस को आप बिल्कुल फॉरगो नहीं कर सकते। तो एज WWF वी आर ट्राइंग टू डू दैट और ये सिर्फ एक इनिशिएटिव का मैंने जिक्र किया है, इस तरह के और भी चीजें हैं जो हर जगह पे हम लोग इंडिजिनियस नॉलेज को ऐड ऑन कर रहे हैं आज के स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि सिर्फ अकेले वो भी काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन काम इस पे जरूर हो रहे हैं। थैंक यू। Thank you so much to all our panelists for making this debate not only about gender. Even now we have like moved on to the local knowledge and traditional knowledge, and we have inculcated. Thank you each one of you. It's actually quite a session, and yes, we have another panel discussion as well, and we can take your questions. ये मसला बहुत अहम है क्लाइमेट चेंज का। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा भी ये जरूरी है, इसलिए आज जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है, अगर क्लाइमेट का मसला इस तरह चलता रहा तो कल के लिए जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है उनके पास भी नहीं होगा। तो इसलिए ये इतना अहम मसला अपने कम्युनिटी को समझाने के लिए समझाने में और समझने में आसानी होती है। या अक्सर स्टूडेंट सवाल इसलिए नहीं कर सकते कि अपना सवाल डिलीवर नहीं कर सकते। मैं इंग्लिश बोलूंगा अगर अपना सवाल डिलीवर कैसे करूंगा, बात करना भी बड़ा मसला होता है। इतनी अहम बातें होती है, इतनी आप जो एक्सपर्ट्स हैं या टीचर्स हैं, जितने भी सारे मेरे टीचर भी बैठी है, लेकिन सुनने वाले बात को समझ नहीं पाते।
तो इसलिए अगर अगला डिस्कशन जो है या पैनल है वो उर्दू में बात कर ले तो बात भी करने में आसानी हो। Thank you so much. I agree with the suggestion and तो मैं even though मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा था लेकिन एक आदत की वजह से आई एम सो सॉरी। Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you, sir. They're very well. Thank you. Ms. Sofia Becker, advisor for the Pak German Climate and Energy Partnership. Ms. Sofia Becker. Thank you so much, ma'am. Ms. Seema Samat, Prime Minister, Gender, Environment and Strategic Initiative. Ms. Seema. Next is Mr. Muhammad Fawad Hayat, Senior Director of Recharge Pakistan at WWF. KP. Thank you, sir. Next is Dr. Sophia Khalid, Chairperson of the Environmental Sciences Department, Alam Iqbal Open University, Islamabad. Thank you so much, ma'am. Dr. Habib Jan, Director at the Environmental Protection Agency, Khyber Pakhtunkhwa. Thank you so much, sir, for visiting us from Khyber Pakhtunkhwa. Thank you. Oh, sorry, Ma'am Sidra is the main character of this panelist. So I want to invite Ms. Sidra, Advisory Board Committee, NYCC, and faculty member at Namil University Governance and Public Department. Thank you so much, ma'am, for your time. Thank you, sir. अभी हमारे पास रिफ्रेशमेंट है गेस्ट के लिए हम इधर सर्व करेंगे और बाकी पार्टिसिपेंट के लिए कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं तो प्लीज आप विजिट कर लीजिए आप लोग सिर्फ 10 मिनट लें इसके बाद सेकेंड पैनल डिस्कशन है only 10 to 15 minutes. In future या अभी in present पाकिस्तान से climate को related issues आ रहे हैं उस पे हम
panel discussion. Third party. Our next panel discussion is on youth engagement in global climate policy, shaping the road to COP29, moderated by Mr. Safian Shams, faculty member of Governance in Public Policy Department at Nabil University, Islamabad. This session will feature Mr. Bilal Anwar, CEO of NB Emirates. Sir, आप आ जाएं। Second panelist is Miss Aisha Jamshid, Country Director of World Hunger Haifa. Thank you so much, ma'am, for your every support to invite. Next is Mr. Muhammad Umair Mufakir, CEO of NYCCC. Next is Mr. Muhammad Javed Tariq, DIG Islamabad Police. Welcome, sir. Our last panelist is Ms. Sidra Riaz, NYCC Advisory Board Member and Faculty Member at Nabil University, Islamabad. Please join me in welcoming our distinguished panelists. Thank you, panelists. Good morning, everyone. I hope you are all doing good. हमने जैसे फर्स्ट पैनल की लास्ट में ये चीज समझी फ्रॉम दी रिस्पॉन्स ऑफ क्लैपिंग कि हमें जो है किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, बट आई थिंक वी शुड कीप इट बाइलिंगुअल। हम जो है वो कुछ इंग्लिश में करेंगे, कुछ उर्दू में करेंगे, सो इट वुड बी इजी, क्योंकि वो सलीस उर्दू जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फॉर द वर्ड्स जो कि काफी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उसके लिए सो वी विल कीप इट इन बोथ वेज। First of all, I'm honored to be moderating this important discussion on youth engagement in global climate policy, shaping the road to COP29. Today we are together here to bring experts and advocates who are actively working to empower youth and strengthen our nation's climate resilience. Before we dive into our panel discussion, I would like to mention here that first of all, I would thank all of the panelists for joining us in today's discussion, and due to
to the time constraint, I will keep our question number and perspectives. Starting from Mr. Bilal Anwar, CEO of the National Disaster Risk Management Fund. With your extensive experience in international climate change policy and climate finance, how do you see specifically youth from vulnerable regions like Pakistan influencing global climate conversations at platforms like COP29? Yeah, thank you very much. Thank you very much. This is going to be a real challenge actually to speak in Urdu में. लेकिन ये है कि आपको हमारे यंग भाई ने की तरफ इशारा किया तो कोशिश हम जरूर करेंगे. लेकिन आपका जवाब आपसे सवाल का जवाब देने से पहले एक 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 पॉइंट में जरूर ना ये उर्दू लैंग्वेज के हवाले से एक पॉइंट में रेज जरूर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब बहुत सारे काम नहीं और उसमें एक बहुत बड़ा काम इसमें भी हुआ कि हमने अपनी लैंग्वेज को इस तरह से एवोल्यूट नहीं किया. इस तरह से उसका एवोल्यूशन होना चाहिए था और उर्दू जुबान का हमने नहीं होने दिया. उसकी अपनी वजूहत हैं, पॉलिटिकल हैं, एथनिक हैं और बेशुमार और उसकी रीजन हैं. तो अब अगर मैं डिजास्टर प्रोन को आफत नदा कहूँ, आफत तदबीर कहूँ और आफत शुदा कहूँ या क्या कहूँ और उसके अपने कनोटेशंस हैं. एनीवे हम पूरी कोशिश करेंगे जी. मकसद ये होना चाहिए कि बात समझ में आ जानी चाहिए. और दूसरी बात यह है कि हमें लैंग्वेज कोई अच्छी बुरी नहीं होती. अपनी लैंग्वेज है उसका एक अपनाइत होती है, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन मैसेज क्रॉस जाना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए. उसके लिए अगर यहाँ जबान की हदें खत्म हो रही हो तो वहाँ पे इशारों से और बाकी जो जिस्मानी हरकत हैं उनसे भी फायदा उठाया जा सकता है. So I won't really go into that direction. लेकिन anyways, so anyway, coming back to your question कि जो यूथ है स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान का यूथ है और क्लाइमेट चेंज के जो पॉलिसी डिस्कोर्सेस हैं, पॉलिसी डेवलपमेंट के जो डिस्कोर्सेस हैं, जो फोरम्स हैं उनमें यूथ कैसे एंगेज हो सकता है और कैसे अपना रोल और अपनी कंट्रीब्यूशन वो देख सकता है. तो मैं अक्सर कहता होता हूँ और हमारे NDRMF में ये चीज काफी हद तक इंस्टीट्यूटेड भी है कि हम पॉजिटिवली बाइस्ड हैं टुवर्ड्स यूथ. हम यूथ को बड़ी मौके देते हैं, उनको आगे लेके आते हैं, उनकी बात करते हैं. तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर कोई इसको वाकयातन जो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग है और क्लाइमेट फाइनेंस के जो इस वक्त डिसीजंस आ रहे हैं, जिस तरह से पॉलिसी इवॉल्व हो रही है, उसमें अगर कोई रोल अपना प्ले कर सकता है जिसको असूली तौर पे अपना रोल प्ले करना चाहिए वो यूथ ही है. क्योंकि इस वक्त की जो पॉलिसीज हैं वो अगले 25 से 30 सालों तक इम्प्लीमेंट रहेंगी. तो वो हम एक टर्म यूज करते होते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिसी में कहते हैं कि लॉकिंग इन फैक्टर होता है. कि हम इसीलिए कहते हैं कि पॉलिसी को खासतौर पर इंटरनेशनल पॉलिसी को बहुत ही सोच समझ के बाद और बहुत डेलिब्रेशन के बाद बनाना चाहिए. क्योंकि जब एक दफा एक पॉलिसी बन जाती है, एक कानून बन जाता है, तो फिर उस कानून को उस पॉलिसी को चेंज करना इतना आसान नहीं होता. तो उसका एक लॉकिंग इन फैक्टर हो जाता है, हम उसमें लॉक हो जाते हैं. तो बैड पॉलिसी बड़े लंबे अरसे तक चलती रहती है. तो यूथ क्योंकि उन्होंने आगे रहना है, इन माशरों में रहना है और they are going to be impacted, so they have to create the opportunities. अपने लिए opportunities उन्हें create करनी चाहिए. कैसे करनी चाहिए? एक तो ये है कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनमें अब जो यूथ की वॉइसेस हैं, जो यूथ की प्रेजेंस है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसको एक्नॉलेज किया जा सकता है कि अब उनको टेबल के ऊपर सीट भी मिलती है, उनको बोलने का मौका भी मिलता है और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होती हैं उसमें वो अपनी कंट्रीब्यूशंस भी करते हैं. तो इस तरह के जो फोरम्स हैं, इस तरह के सेमिनार्स हैं, इवेंट्स जब होते हैं, इसका मकसद ये होना चाहिए कि यहाँ से कुछ ना कुछ चीज जो है वो कल्मिनेट हो.
और कल्मिनेट होके इवॉल्व होके आप जो रीजनल जो यूथ के फोरम्स हैं उनके साथ अपने आप को एंगेज करें और उसके बाद इंटरनेशनल फोरम में अपने आप को एंगेज करें, ताकि ये है कि ये आपकी वॉइस जो है वो वहां तक पहुंच सके। ये एक दिस इज समथिंग, ये किसका एक्टिविस्ट मोड है, लेकिन इसका मोर एक इसको कहा जा सकता है ना इंटेलेक्चुअल या कंट्रीब्यूटिंग मोड जो है वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स के कमरे में, तो आप लोग अपने तौर के ऊपर कितनी ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, कितना ज्यादा इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो। और इसमें जो एक मसला वो ये भी है कि क्लाइमेट चेंज के जितने भी एस्पेक्ट हैं, हम मिटिगेशन को ले लें, अडेप्टेशन को ले लें, फाइनेंस को ले लें, ग्रीन हाउस गैस किसी को भी ले लें, तो वो किसी एक सब्जेक्ट में पूरे नहीं आते। तो वो जो सब्जेक्ट बाउंड्रीज हैं उनको नॉक डाउन करना पड़ता है। अगर आप मिटिगेशन अडेप्टेशन की कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर आप उठा के देखें या कोई भी इंटरनेशनल एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखें, तो उसको अगर आप थोड़े से खुले दिमाग के साथ पढ़ेंगे तो यू फाइंड के आपको वहां पे फिजिक्स भी नजर आएगी, केमिस्ट्री भी नजर आएगी, पॉलिटिक्स भी नजर आएगी, सोशियोलॉजी भी नजर आएगी, और इसी तरह के और साइकोलॉजी भी नजर आएगी बाय द वे, और इस तरह के और बेशुमार एस्पेक्ट्स आपको दे विल ग्लेयरिंग एट योर फेस, यू जस्ट नीड टू kind of read from that particular mindset, और आपको ये सारी चीजें लेकिन जब आप अपने आप को स्लो डाउन कर देते हैं और सब्जेक्ट मैटर की बाउंड्रीज के अंदर रह के इन चीजों को हमारे पढ़ाने वाले भी इसी तरह पढ़ाते हैं, सॉरी टू से कुछ एकेडमिक्स जो हैं वो कमरे में मौजूद हैं, और हमारे पढ़ने वाले जो हैं वो भी इजी रूट देखते हैं जी कि ठीक है जो है उसको करो, जितना है असाइनमेंट है उसको करो। तो यू रियली हैव टू नॉक डाउन योर मेंटल बाउंड्रीज और इससे आगे सोचना पड़ेगा। या भाई आपसे आगे निकल के सोचेंगे, क्योंकि पॉलिसी कभी भी कंफाइंड नहीं हो, it by nature, by definition, the policy has to be a kind of a bottomless and endless phenomenon. और जब उसको देखने के लिए आपको एक नए एंगल और एक नए लेंस के साथ इनको देखना पड़ेगा, और उसी सूरत में आप अपनी रिसर्च को, अपने व्यूज को, अपने इनपुट्स को कम्युनिकेट करके दूसरे लोगों के साथ शेयर करके कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट का जो प्रोसेस है उसमें से उसको निकाल के अपने आप को आप एंगेज करें इंटरनेशनल फोरम्स के साथ, मेक श्योर के आप यहाँ के जो व्यूज हैं, यहाँ के जो चैलेंजेस हैं, आप उनको वहां पे लेके आए। इंटरनेशनल फोरम में कॉप्स सबसे बड़ा एक क्लब है, तो इसमें 204 कंट्रीज लड़ रहे होते हैं, और किसी भी कॉन्टैक्ट ग्रुप में या पॉलिसी मेकिंग, और हर एक का इतना ही बड़ा मसला है इतना पाकिस्तान। दिस इज अ नेगोशिएशन प्रोसेस, तो उसमें लेना देना होता है, डीलिंग और डीलिंग होती है, और ये सारा कुछ होता है। यू नेवर कम अप विद द परफेक्ट सॉल्यूशन और परफेक्ट डिसीजन, बट आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, और इसको इसी तरीके से लेके जाना पड़ेगा। तो ये दिस इज अ लॉन्ग बैटल, इट्स अ मैराथन। डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेके जाना चाहते हैं। आप इसको इस मैराथन को एक लंबी मैराथन के तौर पे लेके जाना चाहते हैं, या आप इसको कंसेक्यूटिव और नंबर ऑफ स्प्रिंट्स में लेके जाना चाहते हैं। दिस इज एंटायरली अप टू यू, आई थिंक, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये एक लंबा प्रोसेस है, ये लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई को इसी तरीके से लड़ना चाहिए। तो बट the youth is very much energized and they are very much open for discussions. I think this is what matters at the end of the day. Thank you for that insight. और डेफिनेटली मैं इस बात को आगे लेके चाहूंगा कि जैसे हम देखते हैं कि जब अभी हम मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि दे आर द पॉलीमैथ्स, मतलब डूइंग मैनी साइंसेस। So we should not focus on only one aspect of our discipline. हमें जो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे सर ने बोला। और सेकेंडली ये है कि हमें जो है उसको क्लाइमेट चेंज जैसे हम देखते हैं तो वो तो डेफिनेटली हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। जैसे हम सुनते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट एन इन्वायरमेंटल इशू, इट्स अ डेवलपमेंट इशू ऑल्सो। सो डेफिनेटली जब आप कनेक्ट कर पाते हैं तो इट लीड्स टू एन इनोवेटिव पॉलिसीज। सो now we will build on what has been said, and Mrs. Aisha Jamshed, the country director for French Alpha Pakistan. This organization is a very grassroots initiative in Pakistan. What do you think? How can youth-led grassroots initiatives strengthen anticipatory action for climate adaptation and resilience, especially in the vulnerable communities? जी, देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि आई थिंक कि हमें
उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। सबसे अच्छी बात इस जो ऑडियंस है यहाँ पे या जो लोग हैं, ये है कि इनोवेशन, प्रैग्मेटिक थिंकिंग और एक नॉर्म्स को चैलेंज करने की एबिलिटी का किसी सेगमेंट में है, तो आई थिंक वो इस ग्रुप में है या इस तरह के लोगों में है जो यहाँ पर अभी ऑडियंस में मौजूद है। जब आप बात करते हैं ग्रास रूट लेवल पर काम करने की, आई थिंक सबसे पहले हमें एक कॉलोनियल माइंडसेट को थोड़ा साइड पे रखने की जरूरत है। हम सेगमेंट करके चीजों के ऊपर काम नहीं कर सकते। जब आप ये कह रहे हैं कि यूथ ही एक्सक्लूसिवली कुछ कर सकते हैं, तो एक्सक्लूसिवली एज ए सेगमेंट यूथ भी कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिवली एज ए सेगमेंट बाकी जो आपकी कम्युनल सेटअप है उसको ग्राफिक सिस्टम के तौर पर समझें तो वो भी एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं कर सकते। यूथ के पास सबसे ज्यादा पावर टू चेंज जरूर है, पावर टू ड्राइव चेंज है। सस्टेनेबिलिटी को ड्राइव करने की एबिलिटी यूथ के पास ज्यादा है। आप कनेक्टेड हैं ज्यादा, आप ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी को लीड और एनहांस कर सकते हैं। स्पेशली जब कम्युनिटीज के अंदर जाकर काम हो रहा होता है, जब कम्युनिटीज ओपन अप करती हैं आपके साथ, सबसे ज्यादा बेहतर उस कम्युनिटी के इश्यूज को समझता कौन है, वहां पे के रहने वाले लोग, और वहां पर कौन कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस और चेंजेस हैं जो कि होने की जरूरत है, वो आपको यूथ से बेहतर कोई बता भी नहीं सकता और इनैक्ट भी नहीं कर सकता। जब आप एंटिसिपेटरी एक्शन की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, आई थिंक डाटा जो है वो सबसे बड़ी पावर है, और यूथ के पास या जो एबिलिटी टू कलेक्ट डायनामिक डाटा है वो आई थिंक इस ऑडियंस के पास है, इस तरह के लोगों के पास है जो कि कम्युनिटीज में मौजूद है। ये अच्छी तरह उस एरिया को जानते भी हैं, इंडिजिनस नॉलेज भी समझते हैं, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग भी है, और आप किस तरह दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं उसकी एबिलिटी यूथ के पास ज्यादा है। हमने जहां जहां भी एंटिसिपेटरी एक्शन के अंदर काम किया है कम्युनिटीज के साथ, आजकल बहुत ज्यादा नया जा रहा है लोकलाइजेशन, locally led, people centered. I don't think any of this is new. ये बहुत पुरानी चीजें हैं, और ये वही चीजें हैं जो शुरू से, अगर एज ए सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव में बात करूं, ये फाउंडेशन है उस चीज की जिसके ऊपर हमारे जैसे इदारे काम कर रहे हैं। जब हम यूथ की इंटरेक्शन की बात करते हैं, ज्यादा रिस्पांस अच्छा वहां पर आया जहां पर यूथ के लोग, यूथ इंगेज था रिस्पॉन्सेस के अंदर। एक दफा हमने फॉर इंस्टेंस अगर हीट वेव में रिस्पांस किया एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दूसरी दफा उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया आने के लिए, उनको ऑलरेडी पता था कि क्या चीज होनी है और उन्होंने खुद ही से उस चीज को मोशन में डाल दिया। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज है जो कि हमें एज ए नेशन भी चाहिए, इंडिपेंडेंस, कि हम लोग खुद से काम कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, बजाय इसके कि हम वेट करें कि हमें कोई आएगा और बताएगा कि आपने ये करना है। एंड पर्सनली मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि हम इनोवेशन को या इमेजिनेशन को लिमिट करें टू टेल पीपल कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आई थिंक पीपल नीड टू हैव द एबिलिटी, और स्पेशली यूथ नीड टू हैव द फोरम्स एंड द करेज and the self-accountability to talk about issues and bring issues forward. Thank you for that valuable insight. And definitely we know this fact that Pakistan is experiencing generation boom. We are the maximum number of people, the youth. So definitely हम अगर stand लेंगे और जैसे मैडम ने कहा कि हमें जो है उस बहादुरी के साथ विदाउट एनी फियर स्टैंड लेना होगा, सो इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए एंड स्टैंड भी लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारा एंड हमारा ही फ्यूचर है। ओके, सो नाउ मिस्टर उमैर मुफक्किर, CEO of the Native Youth Club for Climate Change, as the CEO of the NYCC, आप सोचते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज आप एंगेज करते हैं इस डिबेट्स में और इन इनिशिएटिव्स में फॉर द क्लाइमेट एक्शन? सीनियर बेटे भाई के सामने बात करना ये एक बार से पार है हमारे लिए, और बातें तो यही करेंगे। जस्ट मैं अपनी देना चाहूँगा कि क्लाइमेट जो है वो
प्लांट उसको हम स्टॉक कर दीजिए प्लांट कर सकते हैं, उसमें जस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब नुकसान जो ज्यादा हो रहे हैं वो एक वजह ये कि हम उसके साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो वो स्पीड की हम बात कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी की खौफ मौजूद है, तो हम जो इस वक्त कर रहे हैं वो कार्बन इमिट हम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद अब हमें जो हम एडुकेशन की बात कर लेते हैं इस तरह, तो उसमें भी हमें कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी। और इसके लिए हम क्योंकि हम बात कर लेते तो पाकिस्तान की भी हम कई मसाइल के हम शिकार हैं। क्लाइमेट जो है वो इन सब की माँ जैसे है कि इनके साथ सारी मसाइल जो वो जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम खराब होगा, जैसे कि हमने लाहौर में देखा कि क्लाइमेट वजह से वो जो हो गया हुआ था, तो एक माह 15 दिन तक वो सारा सिस्टम ट्रांसपोर्ट मार्केट्स और सारा जो चीजें थी वो बंद थी। तो उस वजह से क्लाइमेट को जब हम इसके साथ रिलेट करते हैं तो उस सूरत में हमें इन सारी चीजों को, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ इट, क्लाइमेट एक सिस्टम है और क्लाइमेट के अंदर हम जो जब इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो वो जो सिस्टम के अंदर चीजों को अल्टीमेट होगी। फॉर एग्जांपल हम अगर सिस्टम की बात, तो इससे इकोनॉमिकली भी हम डिस्टर्ब होंगे, हमारे इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, हमारे हेल्थ इश्यूज होंगे, इसके अलावा हमारी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, पीस होगी और कई मसाइल जो है कि इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब जो हम क्लेम कर रहे हैं कि चूंकि हम यूथ और पॉलिटिकल कंट्री भी है, हमारे पास भी मौजूद है, हमारे लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने ये भी देखे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे ज्यादा डोनेशन लोग रहते हैं। तो अब इसमें अगर ये सारी चीजें मौजूद है, अब इनको सिर्फ रिडायरेक्ट करना है। हमने इतने सारी खुद को इंगेज किए, उनको हमने ना 1 रुपया भी तक दिया है, ना हमने उनकी कभी खर्चा किए, सिर्फ उनको हमने डायरेक्शन की रीडायरेक्ट करके, जो कि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिसका हम बार बार बात कर रहे थे यहाँ पे प्लास्टिक बहुत बोतल पड़ा हुआ है, अब हम सिर्फ उनको कह रहे कि इसको यहाँ पे नहीं किधर कर दें, सिर्फ इतना हमने इनको बताना है, कन्वेंस करना है। क्योंकि क्लाइमेट भी एक ये है कि जब आप लोकल ग्रास रूट लेवल के ऊपर बात कर लेते तो लोग आपको कहते हैं, हम खुद भी इसी एरिया से ताल्लुक रखते क्यों कर लेते, कहते कि ये डिजास्टर आ जाता है, ये चीज वो रिलेट करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हासिल। अब हम ये भी तो कम से कम कर ले कि नेचर को हमने कितना डिस्टर्ब किया, इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो आएगा। तो अब इन लोगों को कन्विंस करना, इन ग्रास रूट लेवल के ऊपर कन्विंस करना, सोशल बनाना, ये अब हम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में हमारा एक नेटवर्क जो है मौजूद है, और हम उसको ग्रीन जॉब के हवाले से भी उनके साथ बात कर लेते कि इसमें जॉब भी जो उसमें भी जैसे आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, ये दूसरी सेक्टर है, तो कई चीजें जो है वो इनके साथ रिलेट है, और हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं, उनको अपने अटैच भी कर रहे हैं। और जो हमारे कंसर्न के इदारे होते हैं, जैसे कि इंडिया रिमेफ हो गया, विधानगर है, या की जो सपोर्ट हमारे हमारे साथ होती है, तो उनके साथ उनको हम लोकली वहाँ पे इंगेज कर लेते हैं कि इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम बच्चे भी उनको दे देते हैं। क्योंकि जब भी डिजास्टर या इस तरह के पास आ जाते हैं, तो जो मेन फ्रंट पे लोग होते हैं इदारे होते हैं, डिस्को और इम्पोर्ट आर्ट, ये सारे लोग होते हैं, लेकिन साथ साथ वॉलंटियर जो हमारे लोकल लोग हैं वो भी साथ में उसमें और जो मेन चीज किरदार अदा करते हैं वो है यूथ। तो हम उसको यूथ को अवेयर कर रहे हैं, उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव। Thank you. It's good to hear all of these efforts of the NYCC, and definitely हम जो है वो rights, civic rights की बात करते हैं, लेकिन कभी हम civic duties की तरफ नहीं देखते. So as youth, as civilians, we should also look at the civic duties. So उनमें से ये चीज आ जाती है कि हम awareness जो है उसको propagate करें, क्योंकि we are the maximum in numbers, so we should transfer this knowledge of the current climate change, और हमें जो है हमारे जो हमसे ऊपर के लोग हैं, हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको भी बताना है, and also to the people living in the marginalized communities. Coming toward our next panelist, Mr. Jawad Tariq, Deputy Inspector General of the Islamabad Police. सर, आप क्या समझते हैं कि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो किस तरह से NYCC टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके क्लाइमेट एक्शन के लिए यूथ को एक तरह से इंस्पायर कर सकती है, उनको इस चीज के लिए कन्विंस कर सकती है कि वी शुड हैव क्लाइमेट एक्शन?
as far as the role of police is concerned, police being the first responder in many different situations in disaster management as well. उसमें बहुत सारी जगहों के ऊपर जरूरी नहीं होता कि इंडिया में या गवर्नमेंट का बाकी सिस्टम है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या रिस्पांस के लिए वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल बिल्कुल प्ले करती है और स्पेशली फॉर्मल एरियाज। तो उसके अंदर जो मसला आता है बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहली चीज है रेस्क्यू और उसके बाद आता है रिलीफ। तो दोनों चीजों के अंदर दोनों फंक्शंस के अंदर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो सिविल ऑर्डर को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन के अंदर जब उसके इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं तो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा इफेक्ट जो आएगा भी और आता भी रहा है वो दैट इज फूड स्कैर्सिटी। उस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो सिविल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, सिस्टम कोलैप्स कर देता है, स्टेट का सिस्टम कोलैप्स कर देता है और करते हुए देखा भी है। तो उस सिचुएशन के अंदर स्पेशली रिलीफ के अंदर जब जरूरत पड़ती है वो सबसे ज्यादा फार फ्लंग एरियाज में यूथ की और वॉलंटियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहाँ पे बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करती हैं बट एट टाइम्स देखा गया है स्पेशली 2022 का जो फ्लड था उसमें मैं खुद गुलस्तान में सर्व कर रहा था, फ्लड अफेक्टेड एरिया के अंदर था। तो वहाँ पे गुलस्तान में और सिंध में जो है वो रिस्पॉन्स बड़ा डिलेड आया। उसकी दो वजह थी, एक तो रास्ते बंद हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर गया था और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको वहाँ पर रिस्पॉन्ड करने में भी बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। लेकिन उसके बाद जितना चैरिटी वर्क वहाँ पे हुआ उसके अंदर लोगों ने अपना रोल प्ले किया, पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने सब बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया जहाँ पे। लेकिन वो ऑब्वियसली वो सारे एक्शन जो था वो इंडिविजुअल बेस था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ नहीं कर सके या उसका एक्शन नहीं ले सके। तो वहाँ पे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखने में आया कि वहाँ पे वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत थी रिस्पॉन्ड करने के लिए, डिफरेंट तरीकों के साथ डॉक्टर्स की जरूरत थी और रेस्क्यूज की जरूरत थी। तो उस सिचुएशन में जो है वो यूथ का सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि रोल बिल्कुल है स्टेट के सिस्टम को उस मुश्किल वक्त में डिजास्टर एरियाज के अंदर चलाने के लिए जो है वो है इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए और ऐसे किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। Thank you for your response and I would say कि इस तरह की जो institutions होते हैं जो basically to ensure the rule of law उनको मैं वो definitely cooperations करनी चाहिए specifically with the youth organizations। एक तो ये है कि उनको encouragement मिलती है, support मिलता है youth को and secondly hand in hand उसको ये फायदा होता है कि जो police force है not specifically the officers but जो हमारे कांस्टेबल से लेवल के हैं या जो मेजर हमारी पुलिस फोर्स है उनमें भी अवेयरनेस आती है रिगार्डिंग दी क्लाइमेट इश्यूज एंड वो फिर आगे प्रोपेगेट होती है एंड इस तरह से इट्स अ बेनिफिशियल थिंग टू डू। Our next panelist is Ms. Sidra Riaz, Advisory Board Member of the NYCC. My question is that given your role in advising the NYCC, what innovative strategies would you suggest for enhancing youth advocacy in an international climate forum like COP29? Yeah, thank you so much, Sufyan. I think मैं इस बात को यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि जितनी भी अभी तक डिबेट हुई उसमें एक चीज तो हमने क्लियर समझी कि पाकिस्तान में यूथ कल्चर है। Some reports say कि 68% है, some reports say that 64% है, and around more than 60%. But इसमें एक बहुत crucial चीज है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। And as an academician मैंने इस चीज के ऊपर जो अभी तक अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज किया कि इस 68% से कितने परसेंट बच्चे जो हैं जो एक्चुअली स्कूल्स में जाते हैं और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं जिनको मौका मिलता है यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ने का। तो इट इज अस्टॉनिशिंग फॉर द, मेरा ख्याल से ये आप सबके लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा तो लोगों के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में 25 करोड़ में से सिर्फ 3 मिलियन स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट्स अ चांस कि वो यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ें। एक तो ये बात है कि जो 68% यूथ है उसमें से सिर्फ 3 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ रहे हैं। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क
कि वो यूथ एक्चुअली हम उनको रियल एम्पावर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनको यूनिवर्सिटीज में ही एडमिट कर रहे हैं इतनी कम तादाद में, और अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा अराउंड 23 million children are out of school in Pakistan today. They are also like somehow making a part of Pakistan's youth. अगर इतनी ज्यादा तादाद में बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे, कॉलेजेस नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटीज नहीं जा रहे, तो पहला क्वेश्चन अब तो ये है कि आर वी रियली एम्पावरिंग यूथ? द सेकंड थिंग, बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइक क्लासेस और यूनिवर्सिटीज को पढ़ाने के बाद जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इवन तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक चीज रियलाइज किया है कि यूनिवर्सिटीज में एक्चुअली स्टूडेंट्स एडमिट क्यों होते हैं? दे वांट टू गेन नॉलेज, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग। आप दुनिया के टॉप स्किल्स निकाल के देख लें कि दुनिया में स्टूडेंट्स को जरूरत क्या है इन स्किल्स की। उन स्किल्स में ये स्किल नहीं है कि आपने क्लास में सीजीपी आपका कितना अच्छा है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल, नेटवर्किंग का स्किल, कोलैबोरेशन का स्किल, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। और जब जॉब्स पे हायर किया जाता है तो दीज आर द स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट। लेकिन हम कहाँ पे लैक करते हैं कि हम कन्फाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर, और उस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो लर्न कर रहे होते हैं वो ये कि खामोश बैठना किस तरह। जो जितना खामोश क्लास में बैठेगा वो उतना अच्छा स्टूडेंट होता है इन फ्रंट ऑफ टीचर्स आएगी। और एक टीचर के मुंह से आप ये बात सुन रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, सो जितना एक स्टूडेंट खामोश अदब से मेरी बात सुनेगा, मैं ये सोचूंगी कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन जब मैंने 2021 में यूनिवर्सिटी में पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आई जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी, और आई थिंक वो मेरे लिहाज से बहुत सक्सेसफुल रही। मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, मे बी वो इसको अग्री भी करें। जो कोर्सेज मुझे दिए गए वो मोस्टली एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। मैंने स्टूडेंट्स को जाके पहली चीज ये बताई कि हमारा जो 30% फोकस है वो थ्योरेटिकल पे रहेगा, बाकी जो 70% फोकस है आपका वो आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे होगा। हम कम्युनिटी में जाएंगे, हम जाके नेटवर्किंग करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे। जैसे उमर बात कर रहे थे कि आपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताना है कि प्लास्टिक पोल्यूशन के नुकसान क्या, आप क्लास में आके उसके कॉजेज हम बता के घर चले जाएंगे, स्टूडेंट्स से कुछ भी लर्न नहीं करना। व्हाट वी डिड इज कि हमने साइमल्टेनियसली 10 से 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए। स्टूडेंट्स क्या करते थे कि 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उसमें उनका 70% मार्क्स जो थे वो उस प्रोजेक्ट पे मबनी थे, जिसकी वजह से वो जाते थे, प्रैक्टिकल वर्क करते थे, इदारों से जाके मिलते थे, इदारों की ऑफिसर से जाके मिलते थे, जिनसे उनसे उनके स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हुए, जिनसे उनको पता चला कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, कोलैबोरेशन किस चीज का नाम है, कॉन्फिडेंस किस चीज का नाम है। देन वो जाके जिन रूरल कम्युनिटी से वो खुद बिलोंग करते थे वहां पे जाके उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। अभी वन ऑफ माय पैनलिस्ट वर सेइंग कि यूथ के पास बहुत ज्यादा पावर है डाइवर्स डाटा कलेक्शन की। आप जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझ समेत, हम डिफरेंट इलाकों से बिलोंग करते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप अपने इलाकों में जाकर डाटा कलेक्ट करें कि वहां पे एक्चुअली क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वल्नरेबिलिटी की वजह से कौन सी कम्युनिटी ज्यादा इफेक्ट हो रही है और गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। और आप क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के स्टूडेंट्स हैं, आप पॉलिसी में किस तरह से उस डाटा को इनकलकेट कर सकते हैं। हमने उसको रिपोर्ट्स की फॉर्म में शक्ल में तब्दील किया और फिर हमने इदारों के साथ उन रिपोर्ट्स को शेयर किया सो डैट डाटा जो है वो वाइडर ऑडियंस में पहुंच सके। इस सब को बताने का मकसद ये है कि इसके बाद जो मैंने रियलाइज किया कि आप जिन क्लास मैं पढ़ाती हूँ एटलीस्ट उन स्टूडेंट से जाके उर्दू में बात करें, अंग्रेजी में बात करें, जिस लैंग्वेज में बात करें, वो आपसे कॉन्फिडेंटली बात करें। दे हैव द कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने जाके कम्युनिटी में लोगों से बातचीत की है, वो लोगों से जाके मिले हैं, उन्होंने काम प्रैक्टिकली किया है। आप सिर्फ प्रेजेंटेशन करके स्लाइड में बच्चों को आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इस यूथ को जो है आप एम्पावर कर सकेंगे किसी भी तरीके से। और चीज अब आगे मूव करें तो ये बात आती है कि जी डाटा कलेक्ट हो गया, स्टूडेंट से काम वर्क कर लिया, यूथ ने काम कर लिया, गवर्नमेंट लेवल पे एक्चुअली उनको इंक्लूड भी किया जा रहा है पॉलिसी मेकिंग के अंदर या नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा छूट है कि आप यूथ को इंक्लूड कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर। देयर इज नो पॉलिसी इंक्लूजन ऑफ यूथ at any level. If you see that Pakistan with policy making is the elitist policy making, where there is a certain segment of the society which are involved, जो policy making के अंदर involved है, और हमारा जो elite capture है policy making में वो इस हद तक ज्यादा है कि जितने भी youth projects हैं उनको इस हद तक प्रमोशन नहीं मिल पा रही जिस हद तक मिलनी चाहिए।
जब 2021 में मैंने क्लाइमेट एक्टिविज्म स्टार्ट की थी तो बहुत कम लोग थे जो यूथ में थे जो कि इस टॉपिक में इंटरेस्टेड थे। एक जो पॉजिटिव चीज मुझे नजर आती है वो ये है कि अब ज्यादा यूथ जो है इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड नजर आती है, जैसे अभी हमारे पास डाइवर्स ऑडियंस है, बट देयर इज स्टिल गैप। इस जब तक इस यूथ को आप नहीं इस चीज का कॉन्फिडेंट देंगे कि आप जो काम कर रहे हैं हम उसको पॉलिसी में इंक्लूड करेंगे, उसकी अहमियत है, तब तक आई थिंक यूथ के अंदर भी एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लेवल रहेगा कि अगर पॉलिसी मेकिंग इंक्लूसिव नहीं है, पार्टिसिपेटरी नहीं है, तो व्हाट वी आर वर्किंग फॉर, हु वी आर वर्किंग फॉर, टू हु, इफ your country is not recognizing your efforts in the policy making process. So COP29 की बात हो रही है, लास्ट 3 सालों से मैं तो कॉप पे जाने की कोशिश कर रही हूँ, इवन दो क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी माना जाता है पाकिस्तान में कि सिद्रा रियाज द क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बट आई डिडंट गेट द चांस टू अटेंड कॉप टिल नाउ। So the point is that there are questions and those questions has to be answered, and I had to say all of these things is because हम आज यूथ की बात कर रहे हैं और सच कहना important चीज। Thank you. थैंक यू वेरी मच। मैं इसको समअप करूंगा कि अभी रिसेंटली 2 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 3 इकोनॉमिस्ट्स को, एंड फॉर देयर वर्क दे हैव रिटन इन 2012, Darren Smoglo, Robinson, और देयर इज अनदर थर्ड अदर। बुक का नाम है, आपने देखी होगी बुक, व्हाई नेशन फेल्स। तो उसमें बात यही की गई है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव। तो जैसे मैडम सिद्रा ने बात की कि यहाँ पे लीड कैप्चर है, सो डेफिनेटली इट इज एविडेंट कि इन पाकिस्तान देयर आर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन, द स्टेट इटसेल्फ इज मोर ऑफ अ एक्सट्रैक्टिव देन इंक्लूसिव। जिस तरह की आप लॉ एनफोर्समेंट में दफा देखते हैं, जो दफे लगाए जा रहे हैं आजकल, ऐसा ही लग रहा है जैसे फ्री में मिल रहे हो। सो इससे जाहिर है इस चीज से कि दे आर नॉट डूइंग एक्सट्रैक्टिव पॉलिसीज in terms of economics, but also politically and every aspect of life. So as a youth, we must stand up against these specific nature of the state and institutions, so that we can turn it into a beneficial or better format. Any comments from the panelists want to add, or we should go to the questions? I think we should open the floor to the question and answer session. Yes, sir. मैं जी कैसे बैठ करता हूँ। मेरा सवाल जो है वो निशा आपसे, आप दोनों ने डेटा की इम्पोर्टेंस को जोड़ दिया। ट्रस्ट यू मी, मुझे पहली मरतबा मैं बहुत अच्छी मीटिंग अटेंड करता हूँ, ये बात सुनने को मिली है। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा मसला ही डेटा, हमें पता ही नहीं है। हमें लोग बाहर से बताते हैं कि आपके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये लॉ एनफोर्समेंट के लिए मसला है, ये सब के लिए बहुत बड़ा मसला है। कहते हैं कि इफ यू नॉट पार्ट ऑफ सोशल, यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ट्रस्ट टू मी, ऑल ऑफ अस हैव बिकम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। हमें मैं तो भाई बात दूंगा, तुमने बहुत गलत काम किया, पहले भी किया, अब भी कर, प्लीज कीजिए, नॉमिनेट नहीं होगी। कल मैं वॉल ऑफ होप की फंक्शन में था, तो मैंने वहाँ कहा था कि इस वक्त होप को होप दिलाने की जरूरत, ठीक है। अब डाटे पे आते हैं, मैं बहुत बड़े स्केल पे चाइनीज का काम कर रहा हूँ, बिग डाटे पे, अब सबको बंद। इस दफा 4 दफा जा चुका हूँ साल में, अभी फिर जा रहा हूँ इस तारीख। मैं आपसे यहाँ शेयर नहीं कर सकता, टाइम नहीं है। बस आपने जिस मसले की निशानदेही कर दी है ना, वही इस मसले का हल। चंद्रा, आप और आप दोनों, या सर आप भी, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, मैं आज जो हमारे ऑफिस बैठते हैं कहीं पे, इसका हल मौजूद। जितना मुझे पता है, मैंने आज यही साहब को कहा है कि मैं एक पैसा लिए बगैर आके शेयर करने को तैयार हूँ। आपसे वादा करता हूँ कि इस डाटा के ऊपर हम AI को अप्लाई करेंगे। आखिरी फिक्र यह है कि 2 साल के बाद AI बता देगी डाटा की बुनियाद पर कि आप क्या सोच रही, कितना खतरनाक काम है। हमें अपनी सोसाइटी को बचाना है। हमारी सोसाइटी जिस नेट पे जा रही है, अगर ये टेक्नोलॉजी ने बता दिया कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में इस वक्त, आप बताएं रिलेशनशिप कहाँ जाएंगे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएंगी,
अभी कहा गया है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज बड़ा मसला नहीं है, davos में यही डिस्कस होने जा रहा है। सबसे बड़ा मसला सर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, जिसका शिकार ये पूरा माशरा हो चुका है। तो मैं सिर्फ आप में चाहूंगा, आप दोनों में से, कि जो डाटा कलेक्शन है, पहले आप बता दें, आप बता दें, इसके अंदर जिस तरह आपने कहा कि हमें यूथ को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, उसमें हम एक यूनिवर्सिटी प्लस के नाम से प्रोग्राम लाए हैं कि यूथ का जो FYP है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लिंक कर दें आप SDG के किसी भी टारगेट से। आप में 13 के साथ होगा वो। उसकी अच्छी बात यह कि आपने रिसोर्सिंग की बात की, वो HEC सपोर्ट कर रही है उसको। और अब ये HEC ने कानून पास कर दिया है कि जिस स्टूडेंट का FYP उसके SDG से लिंक नहीं होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो काइंडली आप बता दें कि इसके अंदर तो ये यूथ एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, आपके जहन में क्या प्लान है कि जब चौथे सेमेस्टर में बच्चा हो तो उसको उर्दू भी सिखाई जाए, इंग्लिश भी सिखाई जाए। करंट एजुकेशन इज नॉट टेकिंग अस एनीवेयर। अब यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं, इस जमाने में खुल रही थी, अब वो सोचते हैं प्राइवेट कैसे करने। होपफुली ये प्रोसेस हो चुका है मेरे हिसाब से। तो काइंडली इसका जो हल है वो आप अभी दोनों सजेस्ट कर दें, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Actually, I don't know if I'm best positioned to talk about how academics work. वो ये बोल देंगे, एकेडमिक्स ये बोल देंगे। But otherwise, मैं आपको youth की engagement और data पे ये जरूर बता सकती हूँ कि जब हम लोग actually community शो या portrait की बात कर रहे थे at the ground level in the community, I think पहली चीज ये है कि उस data को समझना कि वो data collect क्यों हो रहा है, उसके अंदर आप पैरामीटर्स सेट कर रहे हैं, उन पैरामीटर्स के मुताबिक उस डाटा को कलेक्ट करके लिंक करना उसके एंड प्रोडक्ट के साथ, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इस वक्त इशू ये है कि हमारे पास डाटा शायद मल्टीपल फॉर्म्स में स्कैटर्ड मौजूद जरूर है, उसकी एनालिसिस नहीं हो पा रही, उसकी कंसोलिडेशन नहीं हो पा रही और उसका अप्रोप्रिएट यूज भी नहीं हो रहा। ग्रांट्स के लिए नहीं यूज हो रहा डाटा हमारा डाटा इस चीज के लिए जरूर यूज हो रहा है कि हम कहीं आगे भी फ्लड्स आ गए, यहाँ पर इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई है, अब जितने भी सेगमेंट्स हैं जो वेरियस तरीके से काम कर रहे हैं वो उस डाटा को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। इस चीज के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा करंटली डाटा कि आप उसको ये बताएं कि कम्युनिटीज के लिए क्या चीज बेनिफिशियल है लॉन्गर टर्म पे, उस डाटा को प्लानिंग के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आप SDGs की बात कर रहे हैं, SDGs पे रिपोर्टिंग में डाटा देखिए साइलोज में कहाँ मौजूद है, लेकिन वो कंसोलिडेट होकर कहीं भी प्रॉपर रिपोर्ट की शक्ल पे नहीं आया। आज तक कोई भी हमारी SDG की रिपोर्ट पे किसी भी तरह कंसेंसस नहीं बना कि एक्यूरेट रिपोर्ट है, बिकॉज एवरीबडी इज होल्डिंग देयर ओन डाटा, क्योंकि वो हमारे लिए डाटा पावर है इस वक्त। यूथ की एंगेजमेंट का फायदा ये है कि आप लोग डाइवर्स तरीके से कनेक्टेड है, यूथ आपस में शेयरिंग ज्यादा अच्छी है, टेक्नोलॉजी का यूज बेहतर है, उसको जल्दी पहुंचाया जा सकता है, लार्जर स्केल पर पहुंचाया जा सकता है, वो बहुत जरूरी है जो कि यूथ कर सकता है। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच। पहले तो ये कि अग्री करने के लिए टू द पॉइंट्स, दो तीन चीजें हैं जिसके थ्रू आई थिंक आई कैन आंसर जो चीजें आपने मेंशन की। पहले तो हमने जो बात की मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में या जो डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो जैसे मैंने अपनी टॉक स्टार्ट की तो मैंने कहा था कि 3 मिलियन बच्चा है जो कि यूनिवर्सिटीज में आ रहा है, लेकिन अब इसमें एक शॉकिंग डाटा ये है कि 87 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं यूज में। तो बेशक स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सोशल मीडिया एटलीस्ट हर बंदा पाकिस्तान में डाटा है रिसेंट के 87 मिलियन जो है वो यूजर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पहली चीज तो ये कि सोशल मीडिया में समझती हूँ कि एक बहुत एक पावरफुल टूल है। जब 2022 के सैलाब आए थे तो प्रॉब्ली कोई यहाँ पे बैठा हो तो किसी ने हमारा पेज फॉलो किया हो, एनवायरमेंटल चेंज मेकर्स के नाम से मैंने बहुत ज्यादा फ्लड्स के ऊपर डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स की फॉर्म में सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे शेयर करती थी। उस पे लाइक एक बलूचिस्तान इज ड्राउनिंग मैंने एक ड्राफ्ट लिखा था और उसको ग्राफिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया था और एक पोस्ट के अराउंड 20,000 शेयर्स आए थे एट दैट टाइम। आप सोचिए ये वो 20,000 शेयर्स हैं जो किसी इन्फ्लुएंसर की तस्वीर नहीं थी, वो उस पर तो समझ आती है कि लोग शेयर करना पसंद करते हैं। ये रिटर्न डाटा था कि सैलाब का ये है। तो सोशल मीडिया एक तो डिसइंफॉर्मेशन के लिए भी, मगर अगर आप रियल इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहते हैं और उसको ग्राफिक्स की फॉर्म में शेयर करें
तो आई थिंक हम लोग उसको बहुत बेहतर तरीके से शेयर कर सकते हैं। दूसरी सर चीज, सेमेस्टर हमारे 8 सेमेस्टर हैं, उसमें 4th सेमेस्टर में हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के नाम से। हमने एक 2 क्रेडिट आवर्स का कोर्स रखा है। उस 2 क्रेडिट आवर्स के कोर्स में हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि किसी भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप चूज करें, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट करें। अब प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट्स के पास बहुत पावर है डाइवर्स डाटा कलेक्शन, उसमें होता है कि स्टूडेंट हमारे पास आता है, बेशक वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो या सोशल एक्शन प्रोजेक्ट हो, वो कहते हैं मैं काम करना चाहता हूँ ग्लेशियर मेल्टिंग इन गिलगित बल्तिस्तान। हम कहते हैं नहीं, गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत बड़ा रीजन है, चूज करें कि आप कौन से इलाके में काम। हम उसको नैरो डाउन कराना चाहते हैं कि वो एक सिटी, एक तहसील, एक कस्बे, एक कम्युनिटी पे काम आ जाए। इतना नैरो डाउन डाटा कोई ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट नहीं कर सकती जब तक आप यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट की हेल्प नहीं लेंगे। बिकॉज ये स्टूडेंट से कर सकते हैं कि वो एक जिले, एक कस्बे, एक कम्युनिटी, एक विलेज से उस डाटा को हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने टॉपिक को नैरो डाउन करें। देन जब आप मिड सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर से आप उनसे ये काम कराएंगे, जब वो अपने फाइनल सेमेस्टर तक पहुंचेंगे तब तक उनकी उस टॉपिक के ऊपर बहुत डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तब हम कहते हैं कि अब आप रेडी हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करने के लिए। हमारा जो हमने गैप एनालिसिस किया है वो ये है कि जब एकदम 8वें सेमेस्टर में आप जाके बच्चे को कहते हैं कि जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम स्टार्ट करें, उस बच्चे ने ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सुना होता है, अभी कभी सुना हो तो वो भूल चुका होता है। हम 7वें सेमेस्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाते हैं ताकि रिवाइज हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। 4th सेमेस्टर में सोशल एक्शन प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, 8वें में हम जाके कहते हैं कि अब आप फाइनल ईयर के लिए रेडी हैं। तब जो वो डाटा निकलता है, अब उस डाटा को शेयर करने की जरूरत है। सर इवन अब हम बीएस की थीसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिन्होंने एमफिल या पीएचडी का थीसिस किया है, आपके और आपके सुपरवाइजर के अलावा वो थीसिस किसी ने देखा पढ़ा है? या जो आपकी कमेटी के लोग थे उन्होंने शायद एक दफा नजर पानी की हो। आई थिंक एक तो एचईसी का जो रिपोजिटरी है जिसपे एमफिल और पीएचडी के थीसिस जाते हैं, उस पे ही फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के थीसिस को भी अब पब्लिश करना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज को अब इस टास्क को लेना चाहिए कि जितनी रिसर्च उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर होगी है, जैसे एसटीडी की रिपोर्ट होती है, इस फॉर्म से कोई रिपोर्ट एनुअली हर यूनिवर्सिटी लॉन्च करें। अपने जितने डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उस डाटा को कलेक्ट करें, क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में कंट्रीब्यूट करती है। नमल में सुफियानो में एक ही डिपार्टमेंट में बना रहे हैं, तो हम एसटीडी की रिपोर्ट बना रहे थे कुछ दिन पहले अपने डिपार्टमेंट की, क्योंकि अब टाइम्स हाई रैंकिंग के साथ एक बहुत बड़ी रैंकिंग आ गई दुनिया में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग, कि एक यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे कितना काम करे। आई थिंक वो जो रैंकिंग वाला डाटा है उसी को थोड़ा रिफाइन करके हर यूनिवर्सिटी एनुअल एक रिपोर्ट लॉन्च कर सकती है, देन हैव कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ये डाटा जो है इसको आगे ट्रांसफर किया जाए। ये these are 2 cents from my side. Of course हम मीटिंग करेंगे तो इसको और discuss करेंगे। You might point that. You kindly. अच्छा मेरा एक कमेंट है और मेरा एक क्वेश्चन है। कमेंट मेरा है, अभी सिद्रा ने मेंशन किया कि भी कॉप पे मैं तो नहीं जा सकती इतनी दफा हुई। मैं यूके में पीएचडी कर रही थी इंटीरियर कॉलेज बैंगलोर में, और वहाँ मैंने ये देखा था कि जब भी ये कॉप का टाइम होता था तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज के सब यूनिवर्सिटीज के अंदर से भी वो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते थे। उनका एक प्रॉपर कंपटीशन होता था और उसके बाद इसी तरह वो फैकल्टी मेंबर्स को भी सिलेक्ट करते थे इसी प्रोसेस में। तो मैं वापस आई 2011-12 में थी यूथ को पास करते, तो वो मैंने काफी कोशिश की, लोगों से भी मिली, काफी किया कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं। तो नहीं था, लेकिन अभी इस साल आई एम वेरी हैप्पी 2024 में आई सीन के प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये एक एक्सरसाइज की और किया बच्चों को, और आई होप के फैकल्टी के लोगों को भी इसी तरह प्रोसेस में लाएंगे। तो वो आई थिंक थिंग्स आर इम्प्रूविंग, दिस इज अ वेरी गुड साइन। ये चीजें जो है वो टाइम लेती हैं लेकिन इम्प्रूव होती हैं। इसी तरह अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, 2012 में हमारे पास पॉलिसी आई, 17 में एक्ट, फिर 21, 22, 23 ये बड़े क्रूशियल ईयर्स हैं, क्योंकि इन 3 सालों में बड़ी तेजी से हमारे पास आने शुरू हुए डॉक्यूमेंट्स। और अब आप देखें 2024 में क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बन गई है फाइनली, क्योंकि एक्ट में दैट वाज रिक्वायर्ड, तो उन्होंने अब उसकी हायरिंग शुरू हुई या प्रोसेस जो भी चल रहा है। तो आई बिलीव के टाइम लगता है चीजों में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है।
अगला मेरा जो क्वेश्चन था वो मेरा बिलाल साहब से है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी जैसे की बात हो रही थी कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं है। आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। I have myself been part of one of the policy related to one aspect of environment minister climate change के साथ I was part of a technical group। तो वहाँ जिसने पॉलिसी का फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था she was I think 24-25 इसकी लड़की थी जिसने बनाया था और फिर उसके बाद ऊपर और भी बहुत सारे यंग लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व थे उस पॉलिसी को आगे फर्दर करने में ऑब्वियसली जो कंसल्टेशन वगैरह हुई है। तो टू सम एक्सटेंट है लेकिन स्टिल ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि फाइनल जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें उस तरह से यूथ नहीं होते नेशनल लेवल पे जिस तरह होना चाहिए। तो बिलाल साहब मैं ये आपसे पूछूंगी कि व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट कि जिस तरह अब हमारी वाली जनरेशन में तो ये होता रहा जैसे भी चलता रहा इट्स गुड कि अभी के यूथ इन्वॉल्व हो और जब वो हमारी वाली स्टेज पे पहुंचेंगे तो उस वक्त तक वुड हैव बीन थ्रू ऑल दिस। लेकिन अभी क्या ऐसी चीज हो सकती है क्योंकि हमारी इम्प्लीमेंटेशन साइड बहुत वीक है ना पॉलिसीज तो बड़ा अच्छी बना लेते हैं और काफी कुछ करेंगे तो इन यूथ को आप क्या एडवाइस करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन के क्या ऐसे यूथ गोल्स हैं जो कि फ्यूचर में हमें लगे कि कोई पॉजिटिव चेंज है। जी थैंक यू वेरी मच। सो पहले तो बात ये है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की लेकिन पॉलिसी डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन की साइड के ऊपर भी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क जो कि अभी करने की जरूरत है। एक तो चीज है कि ठीक है किसी को इंडिविजुअल कैपेसिटी में या somebody happened to be falling in that kind of a bracket जो कि बना रहा था but that need to be institutionalized। ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसकी होनी चाहिए और वायलेशन फेयर वाली जो बुक का आप रेफरेंस दे रहे हैं उसमें एग्जैक्टली यही है कि जिन कौमों में इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं वही कौमें तरक्की करती हैं वो नहीं और बाकी नहीं कर पा रही। तो दिस इज एम्पिरिकल एविडेंस बेस्ड वर्क है। तो फॉर्मुलेशन साइड के ऊपर भी ऐसे फोरम्स होने चाहिए जहाँ पे डिस्कशंस पॉलिसी के लेवल के ऊपर हो और उनको एंगेज किया जाए और टू द एक्सटेंट पॉसिबल उनके इनपुट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए। नॉट एवरी इनपुट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। I think we need to be extremely conscious about that as well। ये नहीं है कि हर एक का वहाँ पे हो एक पॉलिसी इज अ ब्रॉड डॉक्यूमेंट एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है और उसी एंगल से उसको देखना चाहिए। उसका दूसरा जो एक एंगल है वो ये है कि नॉन नेसेसरी के जो है वो ऑल द टाइम वो their inputs are going to be super defined, they're going to be very concrete। लेकिन ये है कि उनके एजुकेशन प्रोसेस का भी एक हिस्सा हो सकता है। आई थिंक दिस इज शुड बी के यूनिवर्सिटीज में उनको भेजना चाहिए या यूनिवर्सिटीज के ऐसे फोरम्स होने चाहिए यहाँ पे भेजना चाहिए। तो ये तो एक फाउंडेशन साइड के ऊपर है चीजें। दूसरा किसी भी पॉलिसी का लिटमस टेस्ट इटसेल्फ वही होता है कि वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है। आई थिंक दैट्स द ओनली क्राइटेरिया। अदरवाइज वही आपकी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज वो बेसिकली इम्पोर्ट भी होती है और बालों का ऐसे इम्पोर्ट होती है कि दूसरा उनका नाम भी उसमें चेंज नहीं होता। These are real cases I'm talking about by the way in Pakistan। तो I think इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन when it comes to the implementation I think पॉलिसीज में जब वो अडॉप्ट होती है वहाँ पे एक प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनना चाहिए और इस इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं। ये स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल जो है वो डिफाइन है। अब इस तरह की जो रिडिकुलसली या टू मच डिटेल वर्क पॉलिसी के ऊपर होता नहीं और नॉर्मली दे आर वेरी ब्रॉड फ्रेमवर्क तो उसमें कह दिया जाता है कि ये होगा ये होगा ये होगा लेकिन और उसके बाद हमेशा से ये कहा जाता है कि उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे और बहुत सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आके एड्रेस करेंगे वो फिर वो नहीं होता। आई थिंक तो दूसरा गवर्नमेंट्स स्टेट्स बाय नेचर वो डू नॉट वांट टू शेयर लॉट ऑफ जिन मुल्कों में ये काम हुआ है अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करेंगे इवन इन दोस प्लेसेस इन wasn't in a peaceful fashion वहाँ पे भी इसके ऊपर बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं बड़ी जंगों हुई है लोगों ने एफर्ट की है और उसके बाद जहाँ वहाँ पे जाके ट्रांसपेरेंसी एंगेजमेंट ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक्ट ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई हैं।
So I think evolution, improvement या development के हम बहुत ये जल्दी फेस करते हैं. But ये है कि एक जनरल अवेयरनेस जरूर आई है, जैसे कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सारे प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज कर दिया. अब to be very honest with you, उसके अपने नुकसान. एवोल्यूशन का प्रोसेस का it has to pass through its phases. ठीक है, उसका एक अपना एक बेशुमार नुकसान और हम वो नुकसान अपने इस वक्त देख भी रहे हैं in many form. तो सर ने बात की डेटा की, उन्होंने कहा जी कि डरे उस वक्त से, ये बड़ा मूलबाना तरीके से हम एक वो बात की जाती है, डरे उस वक्त से जब टेक्नोलॉजी आपको बताएगी कि आप क्या सोच रहे हैं. तो मैं इनसे बड़ा मौलवी बन के आपको कहता हूँ कि डरे उस वक्त से जब टेक्नोलॉजी ना सिर्फ आपको बताएगी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि मेरी सोच को इन्फ्लुएंस भी करेगी कि मैंने इनके बारे में क्या सोचना है. We are literally at this stage right now. हम बिल्कुल इस फेज में से इस वक्त गुजर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमें algorithms know lot more than us right now. हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजों में चाहे वो टिकटॉक है, वो लिंक्डइन है, वो कुछ भी है, हम बहुत सारी चीजों को अपनी मर्जी से नहीं देख रहे होते, हमें दिखाया जा रहा होता है. A very recent case actually, or not a very recent case, I just happened to be studying about it कि बर्मा में, म्यांमार में मुखिया मुस्लिम जो थे, उनका जो कत्लेआम हुआ था, उसके पीछे फेसबुक का एल्गोरिथम था. And that basically triggered that hate speech and hatred, and उसके बाद एक पूरा genocide और 30 मिलियन लोग जो है वो displace हो गए. So this is the power of the wrong use of the power of the technology. So we have to be conscious. The youth have to be extremely conscious for these aspects of the. So in a way, ये मुश्किल टाइम है यूथ के लिए. हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम स्कूल में भी थे. यूथ की बात यूथ गुस्से में यूथ गुस्से में. I'm as a youth, I'm a social executive entrepreneur, youth and climate policy educate. I have an international exposure. I have been actively been engaged in the youth and climate policy, working in the UNDP. I work with the Directorate of Science and Technology and proposed science and STI science technology and innovation policy. But my concern is that these all the things that will just remain to the documentation, which should not be remained as. So my question is, I'm having the two questions that Pakistan has been fortunate having around 16 plus, having a 16 plus youth oriented population. But unfortunately, we are unable to utilize that in an effective and efficient way because of youth unemployment, low market needed skill set, and no right exposure and low training and capacity building. So my question is that what government, academia, and industry is doing to convert that asset into effective usage. But unfortunately, that 60% of asset is being becoming a liability for entire nation because of youth unemployment, no market needed skill set. So what industry, academia, and government is doing to utilize this youth population in the right direction, which is not being utilized. And second question is that everyone wants for youth to be a responsible, sensible, and gentle user as a society. So my question is that can a user or a youth can be a responsible citizen without having a digital literacy, without having a social literacy, without having a financial literacy, and without having a political literacy? So how can you expect from a youth to become a socially responsible and a resilient youth for sustainable future? So I would like to ask that youth should be directly engaged because I've been to COP27 and COP28. Fortunately, got an opportunity to represent my country in more than international forums. I've recently been from the World Youth Festival 24 Russia, where around more than 20,000 young leaders from all the nations were being invited under a single platform. So it was all youth-led, youth managed, youth facilitated, and youth proposed as well.
So I would propose that youth should be directly engaged. It should not be just limited just for the conference or just for the papers to that we want to engage our youth. There should be some grassroots level working upon it. So first of all, I would like to appreciate like for still having a such insightful and constructive discussion because it is difficult to meet such people on a single platform. Thank you. Thank you for your comments. And would you kindly tell कि आप किस panelist से पूछना चाहते हैं? जवाब साहब जवाब है उसमें बेहतर जवाब प्लीज ये रिक्वेस्ट होगी यूज कर सकते हो यूज जरा गुस्से में जवाब आप यूज गुस्से में जवाब ख्याल रखो I think कि बहुत सारे जो सवाल थे उनका जवाब आप दे चुके हैं अपनी ओवरऑल क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्वेश्चन आपकी तरफ से मुझे एज सच डायरेक्ट होता हुआ समझ नहीं आया I got to know about your experiences and आप समझते हैं कि youth में involved but question क्या है? Being one government academic industry is doing to engage youth in local and global policy making. So there are two perspectives you are talking about. One is you are saying local and one you are saying global policy making. And if your question is directed towards climate policy making, then we will be talking about two things. One is climate governance at the international level and one is the climate politics at the national or the local level. As you have mentioned कि आप बहुत सारे forums का part रह चुके हैं. एक तो ये तरीका है कि आप international forums पे अगर आपको opportunities मिलती हैं तो कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूंगी जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स का भी शेयर करती हूँ उसमें बहुत सारे यूथ प्रोग्राम्स आते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं या यूथ कॉन्फ्रेंसेस आते हैं इनकेस आप उस पर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस का पार्ट बन सकते हैं दोस्त who cannot be क्योंकि ये सबके लिए इट इज अ प्रिविलेज चीज जिस पे आप जा सकें आई थिंक लोकल लेवल पे जो आप काम कर सकते हैं वो ये कि पीएम ऑफिस और हायर एजुकेशन कमीशन has started green youth movement clubs for a very long time जो कि यूनिवर्सिटीज में ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब जितनी भी इस्लामाबाद पाकिस्तान मिल के पूरे में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबके अंदर जो है ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब्स हैं आई थिंक सबसे जो पहला लेवल है वो आपको ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब्स का पार्ट बनना चाहिए within your own universities and once you are the part of those organizations and everything you will be able to participate in the local policy level या आप जिस तरह से कह रहे हैं national policy level. That would be from my side. Thank you. Assalamualaikum. My name is Tania Tafiz and I am from Qaid-e-Azam University, Department of Earth Sciences. Being an earth scientist or being a geologist or geophysicist, I am concerned about this that you all are talking about the vulnerability data, the risk data, the probability data, which is already available in Pakistan. Alhamdulillah, Pakistan has also its own satellites, so that's I think you can get that data if the private sectors and the public sectors resolve their internal disputes, then the data can get anyone. There is data in Pakistan, but the scarcity of the data is due to the reason that there are barriers between the public and the private sector. That's why you are not getting the data. So I am saying vulnerability data is not a thing. The thing is that vulnerability is causing because of what reasons? I have just come back from Kumrat. There is so much deforestation of deer trees. Deer is the most expensive. You all know how much valuable that wood is. We are doing activities based on plantation to reduce the vulnerability. Why don't we focus on the data of the causes? अगर मैं एक as a geologist or geophysicist or earth scientist मैं अगर काम करती हूँ इस डाटा पे मैं जाके रिपोर्ट करती हूँ डाटा कलेक्ट करती हूँ जो एक्चुअल डाटा है डिफॉरेस्टेशन का जो ग्लेशियर मेल्टिंग के रेट को इंक्रीज कर रहा है रिस्क तो उस इंक्रीज के बाद आ रहा है ना अगर हम वो डिफॉरेस्टेशन के डाटा को इनकलकेट करके जो इलीगल स्मगलिंग या फिर डिफॉरेस्टेशन हो रही है इस तरह के रिसर्च में यूथ को इन्वॉल्व करें
और उसके साथ उनके जो करियर है वो इफेक्ट भी ना हो। बीइंग अ फीमेल, अगर मैं ये जाके काम करती हूँ, आई एम विलिंग टू डू दिस, लेकिन मुझे ये अश्योरिटी देगी गवर्नमेंट कि अगर मैं करती हूँ तो उसके बाद वहां से कोई उठ के मुझे मारेगा नहीं कि मैंने ये रिपोर्ट कर दिया। तो एक्चुअल डाटा ये है जो पाकिस्तान को चाहिए, जो अफेक्ट्स है, जो वल्नरेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को, रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं। इस चीज के डाटा को एआई नहीं कर सकता। ये डाटा यूज कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ तब कर सकती है जब आप लोग हमें इन्वॉल्व तो करें, लेकिन उसके साथ इस चीज की अश्योरिटी भी दें कि यूथ में इक्वालिटी होगी, और चाहे वो जिस एरिया की भी हो, उसकी सेफ्टी हो, प्रोटेक्शन सबसे पहले हो। ऐसा ना हो कि कोई आवाज उठाए इस चीज के खिलाफ जो इफेक्ट्स को कास्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितना भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, वो सिर्फ चाइना, मतलब डेवलपमेंट कंट्रीज की इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं हो रहा है, वो हमारी अपनी मिस्टेक्स की वजह से हो रहा है। मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ, एंड ट्रस्ट मी, it is very sad and disappointed that no one is talking about the vulnerability causes. Everyone is talking about the data of vulnerability. So kindly please discuss about this too. Thank you for your valuable comment. I would conclude on this point कि हमें जो है वो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल रिसोर्स मैनेजमेंट की अप्रोच अपनानी होगी, जहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन कुछ इंस्टीट्यूट्स की ना हो, बल्कि उन इंस्टीट्यूट्स के अलावा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, इंडिजिनस नॉलेज को भी कंसीडर करना होगा हमें, और यूथ को भी इंक्लूड करना होगा। और एज वी गेट टू नो फ्रॉम द फर्स्ट पैनल डिस्कशन कि कम्युनिटीज के बगैर कोई भी पॉलिसी जो है दैट इज जस्ट अ पॉलिसी ऑन अ रिटन डॉक्यूमेंट। So all of these things should be considered, and it's good कि youth जो है वो notice कर रहे हैं। They are not only going to these places for tourism purposes, they are also going to these places as an observer. So I really appreciate this aspect, and for now I conclude this panel discussion, and I would thanks all of the panelists for their valuable insights. Thank you all. Thank you so much. Thank you so much to all the panelists. Now we have Ms. Shaza Fatima Khawaja, Minister of State for Information Technology and Telecommunication of Pakistan. Welcome, ma'am. Again, thank you so much to our panelists for this important discussion on youth engagement in global climate policy. Now we represent here to our esteemed panelists. I would like to request Ms. Now we are launching our official website. I would like to invite Ms. Sadaf, please. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Sadaf Shaukat, social media in charge from NYCC. First of all, I would like to thank Sir Mehboob Fakir for giving me such an honor. Besides all other achievements, I'm delighted to announce here that we are officially launching today our NYCC website, and it is completely functional. You can also check on your cell phones as well. Please have a look of it. आप सब लोग अपने सेल फोन्स पे चेक कर सकते हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। nycc.pk
Okay, so starting phase. So objective and vision of NYCC. All the information is given in that website. And if you want to check about our members, you can also check yours. यहाँ पे आपको कोई भी मेंबर्स की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है. Sorry for the delays, actually the internet was not working. NYC से रिलेटेड जो भी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है वो सारी इस वेबसाइट में अवेलेबल है. It is mobile friendly and desktop friendly as well, so you can check it from anywhere. Thank you so much. Thank you all the fellowship members, all the honorable guests. I hope this is just a start and journey towards the growth will be continued. Thank you so much. Thank you so much, Sadaf. Moving forward, it is our privilege to invite our chief guest, Ms. Shaza Fatima, Minister of State for Information Technology and Telecommunication of Pakistan. Please welcome her on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Mayor Fakir Saab, CEO, NYCCC. Bilal Anwar Saab, CEO, NDRMF, Ms. Aisha Jamshed, Country Director. World Hunger Drive. Ms. Sophia Becker, Advisor, Pakistan, Germany. Pak German Climate and Energy Partnership, Mr. Jawad Tariq, DIG Samad Police, Mr. Fawad Hayat, Senior Director WWF,
and Mr. Dr. Habib Jan, Director EPA, APA. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you, and especially जो यहाँ पे सारे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं, जो यूथ मौजूद है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, and I hope that today the panels and ये सारी discussion जो थी वो आपके लिए बहुत productive थी। आज की जो पहली नेशनल यूथ क्लाइमेट समिट है जो NYCCC ने किया है, I think that I feel that it's an absolute honor to be present before all of you to be able to speak on this very important subject. पाकिस्तान आज हम सबको पता है और आपको मेरे से बेहतर पता है कि बहुत critical junction पे है, especially when it comes to climate change. We're one of the most vulnerable countries when it comes to climate change, and we are also one of the least contributors when it comes to global warming. And अभी किसी बच्ची ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि खाली इस चीज को नहीं हमने देखना, बट हमने इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है कि क्या कंट्रीब्यूशन इनफ लिमिटेड कंट्रीब्यूशन होना या इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना, is it enough to justify where we stand today, or do we also need to do something on our own to prevent the impact of climate change and vulnerability that exists within our country? और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पे समझने की क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो ये है कि how climate change impacts directly and has a double jeopardy on our population, because we have a large set of population which lives under the poverty line. इसी तरह climate change बहुत deeply impact करता है ख़वातीन को. It has actually twice as much impact on women. Pakistan having an agricultural backbone, agriculture is one of the first things जिन पे climate change जो है वो affect करता है, which directly then impacts our food security, which will impact our national economy, which will impact our national security. So ये जो climate change है ये खाली एक buzzword नहीं है, ये खाली मौसमियाती तब्दीली की बात नहीं है, ये actually अपने साथ एक existential crisis लेके आ रहा है, which makes it absolutely critical for all of us together, whether it is youth, adult population, experts, women, people living in different parts of Pakistan. We have to collectively and we have to together comprehensively tackle this problem. और इसके multiple aspects हैं, adaptability से लेके, resilience से लेके, prevention से लेके, mitigation से लेके, और हम सबको collectively इसके हर aspect के ऊपर उतने ही effectively काम करना है जितना effectively kindly जरा, ताकि हम सब मिलके इस मसले का कोई हल निकाल सकें. जहां तक हुकूमत पाकिस्तान की बात है, गवर्नमेंट की बात है, हम ऑब्वियसली टेकिंग कॉग्निजेंस एंड हर साल, पिछले साल भी मैंने कॉप अटेंड की, उससे पिछले साल भी कॉप अटेंड की, और इनकी जो आउटकम्स हैं, व्हाट इज इट दैट पाकिस्तान डज अबाउट दैट, दैट्स द बिगर क्वेश्चन. कि कॉप 28 पे हम गए, वहां पे हमने सबने एक चीज रियलाइज की दैट इट हैज टू बी इंक्लूसिव एक्शन. और उस इंक्लूसिव एक्शन के लिए मैं जब लास्ट ईयर आई वाज SAPM ऑन यूथ अफेयर्स, एंड उसके थ्रू हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है विच इज द ग्रीन यूथ मूवमेंट, और अभी उसकी बात जिक्र भी हुआ. और जो ग्रीन यूथ मूवमेंट है वो तमाम यूनिवर्सिटीज में आपके ग्रीन यूथ क्लब्स हैं. So that is one way of including young people, youth and students into climate action and climate advocacy. हर यूनिवर्सिटी में ये क्लब्स हैं. आप लोगों में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं हम उनको अर्ज करते हैं कि उन क्लब्स को ज्वाइन करें, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उनको इफेक्टिव बनाएं. और जब कलेक्टिवली आप 140 यूनिवर्सिटीज को देखें और 140 यूनिवर्सिटीज में ग्रीन यूथ क्लब्स को देखें,
So you can well imagine the kind of impact that it can create. And that is the kind of impact that all of you need to collectively be working on and not working in silos. So this is something which is of critical importance to understand कि climate action के लिए collaboration बहुत जरूरी है, collectively काम करना बहुत जरूरी है. चाहे आप advocacy में हैं, innovation में हैं, आप community engagement में हैं, हर जगह पे आपको collectively काम करने का फायदा भी होगा और collaboration से काम करने का वो impact create होगा जो आप करना चाहते हैं. So it is very important for especially young people like yourselves to understand the importance of working together, importance of collaboration. और universities में सबसे अच्छी बात ये होती है कि पूरे मुल्क से लोग आए होते हैं usually. और ये जो पूरे मुल्क से लोग आए होते हैं इसको हटा दें. आपको उससे एक मौका मिलता है कि आप सारे मिलके एक दूसरे के मसाइल को अंडरस्टैंड कर सकें. आप अगर अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको रूरल एरिया के मसाइल की बेहतर समझ आती है. अगर आप रूरल कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, आपको अर्बन की समझ आती है. आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, आपको डेजर्ट्स की समझ आती है. तो हर जगह से इकट्ठे हुए लोग जब आपस में मिल के बात करते हैं तब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव और कलेक्टिव प्लान बना सकते हैं क्लाइमेट एक्शन का. So it is extremely important that you make use of this very effective platform that students have today, especially to public sector universities हैं. इसी तरह से जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का सवाल है, आईटी जो है is no longer a vertical. IT today acts as a horizontally cutting arena, सफेद जो मर्जी आप उसको कह लें, because दुनिया में एक पैराडाइम शिफ्ट है आईटी की. आपकी कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपकी हाईटेक टेक्नोलॉजीज तक एवरीथिंग इज नाउ कन्वर्टेड टुवर्ड्स आईटी. एग्रीटेक आ गया है, ग्रीन टेक आ गया है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर आ गई है, प्रिसीजन फार्मिंग आ गई है. आपकी अगर आपने डेटा कलेक्शन करनी है, आपकी जीआईएस मैपिंग आ गई है. ऑल ऑफ दिस हैज टू डू विद टेक्नोलॉजी. So how do we make the best use of technology and innovation when it comes to climate change? That's the second question that you need to ask yourself. So first is, how do you collaborate? And the second is, how do you effectively use technology when it comes to climate actions? Technology का जो use है, for example, within our ministry we have एक entity है Ignite के नाम से. और Ignite जो है वो startups को run करती है, उसको support करती है, incubate करती है. और इन startups, even though these startups go beyond climate action and agri-tech and green tech, हर तरह के बच्चे जो innovation जिनके innovative ideas होते हैं उनको हम induct करते हैं, incubate करते हैं. और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हर सूबे में Ignite के incubators मौजूद हैं. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. और इसी तरह एक तो इग्नाइट हो गया, दूसरा हमने कराया था HEC के साथ मिलकर इनोवेशन अवार्ड. और इनोवेशन अवार्ड में भी ये था कि जो हजारों एप्लीकेशंस आई उन बच्चों की जिनके पास अच्छे आइडियाज थे और उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे वो अवार्ड जीते. इट वाज कैश प्राइज ऑफ up to 1 million and उसके बाद in addition to that it was a 6-month incubation again up to 1 million. तो up to 2 million का वो एक सपोर्ट थी जो यंग इनोवेटर्स के लिए थी. तो इस तरह के प्रोग्राम्स में जो बच्चे सामने आए, एक बच्चा था जिसने एक वाटर फिल्टर फॉर एग्जांपल बनाया था. सो यू पुट इट इन फ्रंट ऑफ एनी टैप एंड द वाटर बिकम्स ड्रिंकेबल वाटर. इसी तरह से एक हमारी यंग बच्ची है, उसने ड्रोन्स बनाए हैं जो कि प्रिसाइज पेस्टिसाइड्स जो है वो फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए करती है. इसी तरह से एक और 3-4 लोग थे, उन्होंने इकट्ठे होकर यंग बच्चों ने रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टार्टअप शुरू किया कि आप अपनी छतों पे किस तरह किचन फार्मिंग करेंगे. और छोटे से छोटे 1 मरले पे 2 मरले की छत पे, जरूरी नहीं है कि आप एकर्स और फार्म्स के ऊपर रहते हैं, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किस तरह आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स पे काम कर सकते हैं, मिनिमम इंटरवेंशन के साथ मैक्सिमम यील्ड दे सकते हैं. तो रूफटॉप फार्मिंग करके आप किस तरह जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ और सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, खासतौर पे अर्बन एरियाज में. सो ये वो इनोवेटिव आइडियाज हैं जो कि बच्चे हमारे सामने लेके आते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं
और हमारा काम है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कि हम पूरे तरीके से हमारी कोशिश होती है कि हम करें। यूजुअली ये काम हम ATC के साथ मिलकर करते हैं, यूथ प्रोग्राम के साथ मिलकर करते हैं, और मेरे ख्याल से कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली तमाम जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं उनको लीड करता है। और ये 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई मियां नवाज शरीफ साहब की, तो हमने शुरू किया था, और मुझे आज 10 साल बाद बहुत खुशी होती है इसको देख के कि ये कितने लोन्स कितने अभी तक डिसबर्स हुए हैं PMYT के, कोई आइडिया है? I think over 100 billion rupees of loans have been youth loans have been disbursed। और ये आसान एक साथ पे कर्जा जात हैं जिनके लिए आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई छोटे बिजनेसेस के आइडियाज हैं, स्पेशली सिंस यू आर रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, सो ये आसान एक साथ पे लोन्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यूथ मूवमेंट का मैंने आपको बताया, इनोवेशन अवार्ड भी हमने इसी के अंदर किया था जो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम था। सो तमाम मिनिस्ट्रीज जो है प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम, वो तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ मिल के वो आगे लेके इन चीजों को चलता है। एंड आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि आप उनकी वेबसाइट देखें और उनके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनसे फायदा उठाएं। आखिर पे मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप में से every individual has the power to make change, and you don't have to wait for कि आपकी कोई कंपनी बनेगी तो आप काम कर सकते हैं, या आपकी कोई फंडिंग आएगी तो आप काम कर सकते हैं। आपका हर एक्शन आज सस्टेनेबिलिटी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। आप सिर्फ इतना कर लें कि आप लिटर ना करें, आप इतना कर लें कि आप पानी ना जाया करें, आप इतना कर लें कि आप कहीं पौधा लगा दें, आप इतना कर लें कि किसी को बता दें कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है। So these are the little steps that we have to take as individuals to make that difference. मैं बहुत अदब के साथ ये कहना चाहूंगी कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पे प्लास्टिक बॉटल्स नहीं होनी चाहिए। You need to have reusable material, you need to use sustainable material. मार्केट डिमांड पे ऑपरेट करती है। आप आज डिमांड खत्म करें प्लास्टिक बॉटल्स की, मार्केट खत्म हो जाएगी। So what is the pressure that you as young people are creating towards the government or the market to take certain actions? That is what you need to think about. आप लोगों की जो ये 15 करोड़ बच्चे हैं आप जैसे इस मुल्क के अंदर, और 15 करोड़ लोग तो ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेट अलोन पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट। So how are you using this power effectively and productively is the question that you need to ask yourselves. Where are you channeling your energies? How are you using a very influential tool which is social media? आप रोज जब उस पर बैठते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आप क्या करते हैं उसके ऊपर? What is it that you share with your peers? What is it that you use your social media for? How much of it is directed towards productive, pressure creating mechanisms for climate action, for example? So these are the questions that you need to ask yourselves. And we as government and manufacturers and producers and traders as market and economy respond to public pressure. But are you creating the right kind of pressure is the question. Are you asking the right questions? Are you demanding the right things? How many of you vote on the basis of कि इसका climate plan क्या है? आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कौन मुझे इस मुल्क की 4 पॉलिटिकल पार्टीज के क्लाइमेट प्लान बता सकता है, उनके मैनिफेस्टोज में से, how many of you have read those? How many of you are tracking those? How many of you are questioning based on those manifestos? आप में से कितनों ने उन मैनिफेस्टोज को पढ़ के वोट किया? So these are the things that you need to realize as a power that you have within yourselves, as change makers that you want to become, and that is where the change comes from.
25 करोड़ आवाम पे 1 million होंगे government officials, politicians, everybody collectively, 2 million होंगे, 3 million होंगे. But the pressure has to come from your end. The action has to come from your end, advocacy has to come from your end. हम आपकी hand holding कर सकते हैं, हम आपके साथ चल सकते हैं, हम आपसे dialogue इस तरह के कर सकते हैं. But we have to collectively take action. The executive, the parliament, and the people. So this is something that I want you to take with yourselves from the conversation today, and to really focus on what is it that you as individuals can do, what are the collaborations that you can foster that can in turn become your power to guide the kind of change that you're looking for. This is something that we need to collectively think about as individuals, as citizens, and especially as young people who have to live, hopefully, in this world for a longer period of time. और आगे से आपके इंशाल्लाह बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, दुनिया में क्लाइमेट इज ट्रांसनेशनल, दुनिया में जहाँ भी जाएंगे क्लाइमेट इम्पैक्ट करेगा. So these are the things that we need to collectively think about. हम on our end, अगर मैं IT की बात करूँ, हम एक नेशनल डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और कोशिश यही है कि हर किसी की एक डिजिटल आइडेंटिटी हो, and that really changes everything, to be honest. Moving towards paperless government, moving towards lesser people standing in queues, public transport, everything available on your mobile phones, everything available on your computers and laptops. So efficiency increase karna, transparency increase karna, from cradle to grave, आपकी जो पूरी एक जिंदगी का cycle होता है उसको streamline करना, वो हमारी जिम्मेदारी है. We're working on that, and inshallah, in a few years, दुनिया में इन चीजों को 10-20 साल लगे हैं जिन लोगों ने सक्सेसफुली किया है. बट हमें कुछ लेट मूवर्स एडवांटेज है, हम लोगों से सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, लोगों की गलतियों से भी सीख चुके हैं. So that kind of gives us an advantage. But it's going to take a few years. We have to be patient about it. But inshallah, very soon, we will be moving in that direction. So with this, I would like to thank all of you, and I hope that you have a big summit ahead. और आप लोग यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ सीख के जाएंगे, और आगे जिन लोगों को मिलेंगे उनको भी कुछ सिखाएंगे. बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Madam Shaza. I would like to thank you for your kind words, and thank you for highlighting such an innovative initiative you have taken for the youth. अब आ जाते हैं एनुअल रिपोर्ट की तरफ. NYCC का ये पूरा एनुअल इज लाइक अ रोलर कोस्टर, एंड alhamdulillah we grow a lot. Or let's have a look on the annual achievements of NYCC. Please, आपकी तालियों की बहुत ज़्यादा जरूरत है. Thank you so much. प्रोजेक्ट्स इंटरवेंशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मैंडेट एक लॉन्ग टर्म है. हमें सोच के हम कोई सीनियर्स के साथ काम करें और हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट के साथ रिलेवेंट सर्विस को दिखाएं. हम चाहते हैं कि जो भी इन फ्यूचर या अभी इन प्रेजेंट पाकिस्तान के क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उस पे हम यूथ के साथ लेके चले, यूथ को लेके काम करें.
Thank you so much. NYCC is doing very great work. Thank you. I request Ms. Shaza Fatima Khawaja to present shields to our esteemed panelists. Please, ma'am, welcome to on stage. Our first panelist is Mr. Bilal Anwar, CEO of NDRNF. Welcome, sir. भाई यहाँ पीछे हो गए यार, ये कैमरा लगा हुआ Second panelist is Mr. Muhammad Umair Mufakir, CEO of NYCC. Next panelist is Mr. Muhammad Jawad Tariq, DIG Islamabad Police. Last panelist is Ms. Sidra Riaz, NYCC Advisory Board Member and Faculty Member, Namal University, Islamabad. Or I would like to request CEO NDMRF Bilal sir or Umair sir to present shield to Ms. Shaza Fatima Khawaja, Minister of Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank Now we have a shield for moderator, Mr. Safian. Please come on stage. CEO Bilal Anwar sir, आप moderator को शील्ड दें. Now we have appreciation sheets for active participant in fellowship, active member in central cabinet, and active participation to making this mega event successful. So I would like to ECO Umair on stage and CEO and DMRF Bilal Anwar sir.
बस इधर की भी अपनी लगा Now we have appreciation certificates for active participant in fellowship, active member in central cabinet, and active participation to make this mega event successful. So I would like to invite CEO and the MRF Bilal Anwar sir, and the CEO NYCC Umair, and DIG Islamabad Muhammad Arif. Please come on stage. So first, we will start from active participant in fellowship. Sumbul Rafiq. Thank you so much. Second is Sabine Ijaz. Sabine Ijaz. Third one is Bilal Khan. Bilal Khan. Thank you, Bilal. Next is Tehmiyat Hafiz. Tehmiyat Hafiz.
Thank you, Tanya. Last one is Salim Yusuf. Salim Yusuf. Salim Yusuf. Name, Fellowship Active Cabinet Members. We have Bushra Ghaffar, Managing Coordinator NYCCC. Bushra Ghaffar. Thank you. Kareem Murad, Partnership and Reporting Secretary, NYCCC. Kareem Murad. Tehreem Siddiqui, Finance Officer, NYCC. Overall, best performance. Mr. Mia Saifullah, General Secretary, NYCCC. Mr. Mia Saifullah. Thank you, sir. Miss Momal Nawab, Head of Communication. Miss Momal Nawab. Mr. Aftab Hamid, Monitoring and Evaluation Coordinator. Aftab Hamid. Thank you, Bilal sir. Mr. Ahbabullah Qureshi, President, Gilgit Baltistan, NYCCC. Miss Nadia Qureshi, President, Khyber Pakhtunkhwa, NYCCC. Miss Nadia Qureshi. Next is Maham Shabir, Deputy General Secretary, NYCCC. Active contribution in event, Sadaf Shaukat, Social Media in Charge. And the last one is myself, Aftab Tabassum, Water Resource Advisor.
Thank you, DIG sir, Arjun. डॉक्टर हबीब जान आप स्टेज पे आए और सूफिया खान। In award list, Rima Zuberi, NDRMF. Rima Zuberi. Qasim, NDRMF. Qasim, NDRMF. Shaista Ramzan, NDRMF. Babar Ali, WHH. Babar Ali. Sabir Shah. Sabir Shah. Thank you, sir. Thank you so much. Now I would like to invite our respected CEO, Muhammad Umair Mufakir, for a word of thanks. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का, स्पीकर का और जो हमारे स्पॉन्सर है इंडियन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर प्लान हमारा हम वो भी आपके साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ मिलकर हर सूबे के अंदर एक मेगा इवेंट करने का प्लान कर रहे हैं। हम हर सूबे के हेडक्वार्टर में एक मेगा इवेंट करेंगे और इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो इंशाल्लाह पाक चाइना में बड़ा इवेंट करेंगे। इसके अलावा हम इस डिबेट को, इस कंटिन्यूटी को हम मजीद जारी रखेंगे और जितने भी हमारे दूर दराज इलाकों से फेलोशिप के मेंबर्स आए हुए हैं इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली जो हमारे एनवाईसीसी के मेंबर हैं, क्लाइमेट चेंज के मेंबर हैं, कोर कमेटी मेंबर हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके मेरे साथ कोऑपरेट किया, हम मिलकर उन्होंने काम किया और इस प्रोग्राम को सक्सेस हुआ। तो मैं अपनी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने स्पॉन्सर का, आप सबका, फेलोशिप मेंबर्स का, गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you each and everyone. अब लंच का टाइम हो रहा है तो